होगा सर, इसके भी होगा। ये इसमें क्या हाईलाइटर है यदि आपको चाहिए तो। ठीक है, ये तुम कैसा कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा इसमें पढ़ लूंगा। Okay, good morning, everybody. Myself, Dr. Vivek Tiwari, currently associated for IT and Tiwari, and I was attached with this institute also from the day one. I have worked over this institute for more than 7 years from 2016 to 2020. Recently, I have joined that. So, I welcome you again. Real Science is a really 7 days FDP sponsored by the SERB University, and it is the third day session. Starting with the session is going to be very interactive, very interesting. A lot of things we are going to discuss in many dimensions. Like a first question will be very new for you, I think so. Title of the FDP is AI and machine learning something. What do you understand? AI and machine learning both are same thing? Both are different. Anyone having any understanding because of you have evolved during your BTech and Tech PhD, you must have understanding. Your perception may be wrong, may be right. That doesn't matter. AI and ML both are same. Or sometimes we talk about ML is a part of AI, something many books, many reference it was written. It is true or not? ML, इसको एंड में करेंगे, एंड में भी समझ नहीं जा रही, कैच कर रहा होगा मेरे को, मैं बीच में आ जाऊंगा. So what I want to say, I love to discuss a lot of things with the students, with the participants. You might have listened three words: AI, machine learning, and deep learning. We normally have understanding AI is a normally older term. It is 30 years, 20 years, 25, 30 years back. It was part of curriculum. Then slowly advancement of the technology and subjects. ML emerged. Then it became a part of curriculum. Then recently deep learning is something that's a part of curriculum. And many stuff in the websites, in the internet that are enough to misguide. A lot of diagram and things, if you refer, big circle was given for the AI, then ML and the deep learning. That is enough to misguide. It will be very long story if I go with that one. Why the people have that misunderstanding? The AI is something, then machine learning, that deep learning. This kind of understanding people have. मैं ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज टॉपिक से बटर जाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ. मैं हिस्ट्री बताता हूँ फिर अपन डायरेक्ट टॉपिक में. AI is a terminology. We have to understand where it was emerged, when it was coming to that. Then ML, deep learning कुछ नया नहीं, it is only the. अब hierarchy as per your understanding is AI, ML and deep learning. Reality is 180 degree opposite. Deep learning or neural network is better to say. It is a much older term. It was introduced in 1941. Neural network. I'm not going to. So neural network is something that was the much older term in to the other. आपने नाम सुना होगा एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो एलन ट्यूरिंग. So Alan Turing was the scientist or admissions that credit goes for introducing the term of ML or machine thinking. ML नहीं बोलते थे, machine. So in 1946, you try to remember, in 1941 neural network, then 1946 he has published a paper about the machine thinking. He has derived a mathematical formula to calculate how a machine thinking or machine behavior is close to the human being. So at that time, he was thinking machine can behave like a human being. Machine has that ability that act as a human being. That was the concept. He has given a mathematical formula that quantify how close a machine behavior is with respect to the human. तो मैं पढ़ना बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट. Then in 1956, John McCarthy जो बोलते हैं ना, father of AI,
He has introduced that term in 1956 about AI. So AI was the newest term, but we have some misunderstanding and that conception like AI is a much older thing. इसमें again discussion हो सकता है कि sir, okay sir, if you are right and that is the fact we are discussing, so why it happened? Why everyone having such kind of perception like AI is older term then ML then DL? ये क्यों हुआ? कोई ने कोई प्लान करके किया क्या? It happened something. वो हिस्ट्री में अपन नहीं जा रहे, बट ऐसा हुआ. क्यों हुआ है वो गूगल करना, सर्च करना बड़ा मजा आएगा. हाउ द थिंग्स वाज इन्वॉल्वड, व्हाई पीपल हैव दैट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह. और गूगल ने भी बहुत हेल्प किया इन सबको तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने. on topic में आते हैं. The topic I have taken with the discussion of the Dr. Anurag, who is the coordinator of this FDP. He was requesting or suggesting to take the responsibility of two algorithms, that is linear regression and the logistic. I normally love to handle one algorithm for the classification purpose. Classification is what is supervised learning, and one algorithm for the unsupervised learning. I assume that you have a better understanding what is the supervised learning, what is the unsupervised learning. You understanding clearly. Unfortunately, whatever the method we are going to discuss in the next two sessions, both comes under the supervised. Linear regression is also supervised learning. Logistic regression again supervised. Again the supervised learning, there are again sub two branches, regression the classic. We clear सबको? Under the supervised learning, again there is two sub branches, regression and classification. So linear regression represents the regression algorithms and the logistic regression comes under the classification. अपन दोनों का nature पकड़ेंगे, दोनों को पकड़ेंगे. So the topic is linear regression. That is one of the well-known method under the supervised learning. So what is linear regression? What is the topic I'm going to cover? The background of the data analytics, because before dive into the machine learning, AI, predictive data analytics, descriptive data analytics, many things are there. We must have basic understanding about the data analytics, because everything comes under the data analytics. Data analytics is a bigger umbrella. So I will try to touch upon what is the data analytics, what are the subcategory under the data analytics. Very briefly, I will touch. Then supervised, unsupervised, I may skip it. If you have already some understanding, I may skip it. Model development life cycle, because everybody over here are whatever the algorithm you are learning, your objective is to having a final model that you can validate, or for the paper presentation, for the research paper, for your MTech, PhD, final output, you want a model in software point of view. So what is model development life cycle? Like a software development life cycle, SDLC we have memory in a software engineering, such kind of. Later I will discuss about the introduction of the linear regression, that is supervised method, understanding of learning, because every algorithm under the machine learning have a learning. So please do not create a such understanding. Given algorithms always have a single training method. ऐसा बिल्कुल नहीं. Even linear regression we have multiple training. Even CNN we have a multiple training. Even KNN we have a multiple training. Do not understand, do not create a such understanding. This is the algorithms I understood. It is the complete algorithms of a linear regression. The moment you will change the learning method, output will be different 100%. 2 + 2 4 नहीं होता machine. कभी नहीं होता. ना 2 + 2 हर algorithm भी अलग अलग. If same data set, same environment you have taken, but the learning method you have changed, you will have a totally different one. That totally different model of the technical means performance wise maybe both the models similar, but technically both the models are. So I will consider with the limited time least square, one of the most famous method under the linear regression. I will try to discuss in very detail how that works. It is a core component of the linear. Then polynomial regression I will also cover. If the time permit, I will try to touch upon the prerequisite. That is my favorite topic in any machine learning algorithms. Again, a simple suggestion. There is no machine learning algorithms or AI algorithms in the data science that are fun. Perfect means you can't say like again interesting. If I ask a question, please make an order of the machine learning algorithm, which is the best one, which is the worst one. ऐसा कोई order नहीं है, कोई order ही नहीं. We cannot say
maybe some Google, if you try to do the Google based on that understanding, someone may have a number one algorithm, number two SSS. That is their perception, but in real sense, there is no such algorithm that all the algorithms are the best within the some context. अब वो context कैसे होता है? Suppose SVM is the algorithm, linear regression is the algorithm, decision tree है. Suppose decision tree again you can use for the regression purpose 100%. अब इसको ऐसे समझाने की कोशिश करो. A problem is given. A problem nature is the regression type. You have to solve. Now you have n number of algorithms. Regression you can apply, SVM you can apply, decision tree you apply, and many others. Discussion simple लगते हैं. You have option of linear regression, you have option of the decision. तो algorithm कौन सी लगाओ? In machine learning package दिया, data input किया, run कर दिया. It is not our understanding. It is not our objective. For 10th class student. Every time, whatever you are doing, you must have the answer one. Data set is given. A lot of algorithms are there. You are in the position of applying any of the algorithms on the given data set. Why? Question why? You might have the mastering of the linear regression, logistic regression, decision tree, assume all are the mastering. कौन सा लगाएंगे? मजाक थोड़ी चल रहा है ये लगा. एक छोटा सेंस देकर आगे चलते हैं. You must have understanding about the data. If the data set having the noise, outlier, cannot or you should not apply the linear. If the data set is given, you know the data set having the noise, data set is not clean, data set is not properly processed, it might have the outlier, might have the noises, you should not, you should not apply at all linear. In such conditions, decision tree is the best. अब आंसर क्यों? हम उसके मेथड में जाएंगे. Decision tree algorithms are very tolerant against the outlier noise. Linear regression is very much sensitive. अब कैसे हुआ ये आंसर? एक आंसर देकर बस आगे चलते. Any of the algorithm the data science is based on the decision matrix. Euclidean distance आएगा भी. PNN based on the Euclidean distance. K means based on the distance matrix. Wherever any algorithm study, the training is based on the Euclidean distance, or you need to calculate the distance between 2 points. ऐसा कोई method आता है किसी में. That algorithm always be very much sensitive against the outlier and noise. क्योंकि एक ही outlier आएगा पूरी distance change कर देगा. अपन डिटेल में नहीं जाना. Decision tree by luck doesn't depend on the distance matrix of any of the distance matrix during the training. वो probability वो proportion पे depend करती है. How many observations are in this class? तो proportion पे depend करती है, ना कि distance between the data. तो मेरे कहने का मतलब है, one algorithm may be great in some sense. You have to attach that algorithm based on the data set, conditions, many things are there, number of features. जैसे मैं आपको नेप बेस की बात करूँ, नेप बेस का नाम सुनो. Net based algorithm, that is original version, always work on the data set that have all the categorical values. Categorical समझते हैं, data set Excel file is given, features are given, all the feature must be categorical. अगर कोई ऐसा features आता है, numerical features are given, मतलब age is a numerical feature. Net based you cannot apply. Salary is a feature you cannot apply. BMI, कुछ भी any of the features that is a numerical feature, the net based algorithm you cannot apply. Ultimate, all the algorithms having some prerequisite, they demand some preconditions, pre-processing, noise, many things are there. So if your data set, your applications fulfill those conditions, you may apply that understanding you might. Otherwise, तो फिर कुछ भी hit and try कर. Try to develop the understanding of the data set of the algorithm. तो अगर टाइम मिलेगा तो I will cover this prerequisite with reference to the linear.
As name suggests, all those methods and algorithms that we use to describe the data, by which we can understand the data. Describing means by using those algorithms, we have a better understanding about the data. Means from the student life, we are using the descriptive data analytics, but we don't know there is a descriptive data analytics like a pie chart, bar chart, all are the descriptive data analytics. अब pie chart से क्या करता है? चलो, we describing the data. This data are given 30% students are this, 30%, 40% are like वगैरह. Bar chart से क्या करते हैं अपन? कुछ ना कुछ interpretation you want to develop with the data. Data के अंदर क्या you want to describe with the help of graphical representation. All these comes under the descriptive data. They are used to describing the data. Okay. What am I doing? This is predictive. That is the most common method that every student that goes for the machine learning that connect themselves like all the supervisor, whether it's a regression, classification, or the predictive. So by using those algorithms, you want to predict. Ultimate model का मतलब क्या समझते हैं? I have a model, I have a data set, I will do some training. Training के बाद we have a model, I will give you input, it will predict. ऐसा कुछ बोलेगा, कुछ predict करेगा. All those algorithms that are used for prediction purpose, the name suggests, comes under the predictive data analysis. Whether maybe it is regression, whether maybe it is classification, कोई भी. ये बहुत इंटरेस्टिंग. Prescriptive. Prescriptive, you can say the descriptive and predictive are the algorithms. Prescriptive is something a system. It is not algorithm. Means कोई बोलेगा sir, this is the algorithm comes under the predictive method. This algorithm comes under the descriptive method. I don't have any algorithm that I can designate. This is the prescriptive because it is not algorithm, it is a system. It is a system. The system behavior is like that. If such that we started calling it is a prescriptive data analysis. आप example देखें समझाते हैं. Predictive में क्या करेगा? Whatever the data you have given, it will predict something. और prediction में क्या होगा? Always one prediction होगा. आपने देखा है कभी input दिया दो prediction किए हो? Means like input is given some kind of thing whether the student will pass or not. ये बोलेगा pass या fail बोलेगा. ये given image whether it's a dog, cat ऐसा कुछ बोलेगा. Always एक output देगा. ये बोलेगा. The difference between predictive and prescriptive that prescriptive algorithm will give you multiple options, multiple predictions. About it, every prediction strength, it will also suggest if you choose that prediction, you may have a better conditions of positioning in the coming days. ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करेगा. This option is how this option is better than other option. It will also kind of things will try to suggest. Means in the predictive analytics we have multiple predictions, multiple options, and each option how much strong each option is also. एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे जितने गेम होते हैं आजकल, गेम कंप्यूटर के गेम में अपन चेस का एग्जांपल लेते हैं. इन अ गिवन टाइम कंडीशन, इफ इट इज योर मूव, यू हैव अ मल्टीपल पीसेस टू मूव, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हो गए. इफ यू चूज ओनली वन पीस, उसके भी मल्टीपल ऑप्शन से कहाँ जा सकते हैं आप? So like in chess game, you choose the particular piece. In a particular piece, it started suggesting if you move that way, your conditions in future may be strong, may be weaker kind of. So it started giving multiple options, even among the multiple options, which is good. So it cannot be possible by using the single algorithm. You can understand it have a multiple options, multiple algorithms. By combining, by incorporating many methods, we may have a such kind of system having that property. We started calling it as a prescriptive. बीच में क्वेश्चन कभी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आखिरी में पूछना है. मैं इसको जल्दी से स्किप कर रहा हूँ. अंडर द मशीन लर्निंग देयर आर मेनी सब ब्रांचेस. इसमें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी नहीं है ना, मैंने जानबूझ के सिंपल किया. बहुत सारी ब्रांचेस है, बट फॉर
beginning purpose. In machine learning, have two type of algorithms. Unsupervised learning and supervised learning. Under the supervised learning, there is a classification, regression. Under the unsupervised learning, मतलब वो सब आ गया आपका PCA वगैरह, क्लस्टरिंग आ गया, और होगा इसमें लिखा नहीं है आपका बिग मार्केट बास्केट एनालिसिस। अप्रायरी का नाम सुना होगा आपने, अप्रायरी ग्रोथ वगैरह, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। आते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जैसा अपने पढ़ा था, सिमिलरली वी हैव अ मॉडल डेवलपमेंट साइकिल। द मॉडल इज अ फाइनल प्रोडक्ट। you must go through a journey. That journey we call a life cycle. Journey have a multiple stations, multiple phases. Each and every phase is equally important. We have to must take care about each and every phase. If you have a proper understanding each and every phase, whatever the model as a final model you are expecting, that will have a capability to satisfy. What is the model development life cycle? ये भी बहुत डिस्कशन लाइक अ डेटा, बहुत बहुत सिंपल कर दिया। As a data scientist, as an engineer, you don't have control over the data. बाकी सब पे आपका कंट्रोल नहीं, don't have control. Means suppose I am the client, IIIT or IIIT NR client. As a company, I am contacting. This is the data set of my students. You just do some analysis and give me some pattern of how kind of student mentality, what features affect the placement or whatever. Means the data set will be given by the client. On the data set, you don't have any control. Data set to start. So I assume that whatever the task is given to you, the data set is with you, given by the client. अब इसमें discussion में नहीं जा रहा है. Data set always not be ready for the modeling purpose. Lot of data pre-processing techniques we have to understand, we have to apply. Again, वो अपने आप में पूरा एक course. But data set is not ready for direct use. Many method, many understanding about the data, right? So that you can change, change body बड़ा अच्छा नहीं। मशीन लर्निंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड चूजन होना चाहिए। I cannot change the data. चेंज की मीनिंग क्या होती है? चेंज की होती है, सपोज द डेटा सेट है गिवन द एज में 25 लिखा है, मैं 30 करूं, इसको तो चेंज बोलेंगे अपन। As a data scientist, I should not, I cannot, or I must not do that. I cannot change the data. I can transform the data. अगर बहुत अच्छा वर्ड चूज करना है ना, तो we should not use in machine learning in term of data set. Whatever the data set are given to you, we want to change it so that it can become a compatible for the machine learning algorithm. Change word use करेंगे मतलब सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं। 2 मिनट में अच्छा एक्सपर्ट हम, आप क्या वर्ड यूज करेंगे? आई कैन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म भी चेंज होता है कि नहीं होता? आप करें, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करें, इधर चेंज हुआ। तो फिर चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस? बहुत डिफरेंस। जब भी कोई भी बोलेगा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मींस आई वांट टू चेंज द फॉर्म ऑफ द डेटा फ्रॉम फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 बाय कीपिंग द data distribution intact. Means whatever the meaning I can acquire from the data set 1, if I transform in the second form, the same kind of meaning I can acquire. Means statistical understanding about the data, I should not touch it. Otherwise, तो कोई learning ही खराब हो गई फिर तो। Means you can transform the data in from many ways by keeping whatever the knowledge, statistical learning you can acquire from the data set 1. If you have transformed your data set or data set version 2, same kind of understanding, same kind of learning, same kind of statistical property you should acquire from the both. learning समझ रहे हैं? डेटा सेट चेंज कर दिया तो वो तो अनर्थ हो गया। फिर आपने बोला कि ये तो सीजीपीए 9 अच्छा दिख रहा है, 8 कर देते, ये नहीं कर सकते ना। प्रॉपर्टी, और अगर टेक्निकल वर्ड बोलूं तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन यू कैन नॉट चेंज। आप जो भी नया ट्रांसफॉर्म करके लाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस से होनी चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल, ठीक है। सो चेंज वर्ड इट इज नॉट गुड, यू शुड यूज द वर्ड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ से तो वंस आई अज्यूम
मींस एल्गोरिथम यू हैव टू चूज। तो बहुत सारी कहानी है, डेटा कैसा है, आपकी ऑब्जेक्टिव कैसा है, नॉइस है वगैरह वगैरह, सो तो algorithm will be chosen by you by considering many property, many parameters, then you have to train your model. ठीक है, once your model, ये again मैंने गलत word use, it is not the correct word, I should train my model, I should train my algorithm, बहुत गलत word, इससे क्वेश्चन पैदा ही हो रहा है, मैं बेसिक क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा, what is the difference between algorithms and model? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मींस डिसीजन ट्री, जो भी एल्गोरिथम आप नाम ले रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, सब एल्गोरिथम्स। और मॉडल भी अपन बोलते हैं, आपने कौन सा मॉडल यूज किया? सर मैंने डिसीजन ट्री मॉडल यूज किया था, बोलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ये है, एल्गोरिथम्स, वंस एल्गोरिथम इज ट्रेन्ड, मींस ट्रेनिंग प्रोसेस इज ओवर, दैट एल्गोरिथम बिकम अ मॉडल। बहुत कंफ्यूजन होता है एल्गोरिथम और मॉडल में, लोग नहीं समझते। डिफरेंस ये है कि एल्गोरिथम मींस इट इज यूजलेस, cannot use algorithm for any prediction, because if the same algorithm you have trained with the cat images, the algorithm will develop their understanding to predict the given image is cat or dog. If you same algorithm you have taken, you give the data set for the buffalo and cow, so it will develop their understanding about the buffalo and cow. Means algorithm is the same, but the moment after the training, behavior of the algorithm will automatically change. So once algorithm is with you, it is useless for you. Once training is over, it develops their understanding for particular application for which you have. So means algorithms don't take any action, model start taking action. You can use the model for decision making. ये थोड़ा सा algorithm में model में difference है. So algorithm, then training, then it become a model. वो मॉडल भी फाइनल नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सारी कहानी है, मॉडल को इवैल्यूएट करना है, चेक करना है वगैरह वगैरह वगैरह, इसको अपने आप में स्टोरी बड़ी है। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली व्हाट यू अंडरस्टैंड, द डेटा इज गिवन, व्हाटएवर द एल्गोरिथम यू हैव टेकन, इट बिकम अ मॉडल। एग्री? क्या होता है इसके अंदर, मैजिक क्या है? रियल सेंस में बोलूं कि व्हाट हैपन इनसाइड द एल्गोरिथम सो दैट इट बिकम अ मॉडल। तो ब्लैक बॉक्स जैसा दिखता है नॉर्मली फॉर स्टार्टिंग ऑफ द कैरियर ऑफ द डेटा साइंस, पीपल थिंक दैट ट्रेनिंग के बाद कुछ मैजिक हो जाता है, फिर वो मॉडल बन जाता है, दैट यू कैन यूज फॉर। बहुत बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी रूट लेवल पे, व्हाट हैपेंड इनसाइड द एल्गोरिथम्स दैट मेक इट एज अ मॉडल? क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ देखिए, ये क्वेश्चन आया, बहुत सही है क्वेश्चन, और कुछ और क्या होता है? सही बोल रहे हैं, वेट का मतलब बहुत से लोग, मैं वेट क्या होते हैं? अच्छा, लीनियर रिग्रेशन में वेट होता है? तो एक्चुअली में क्या होता है, पैरामीटर बोले, वेट थोड़ा आर्टिफिशियल वर्ड बोल दिया, ऑल द मशीन लर्निंग सिस्टम हैव सम पैरामीटर्स। अपन लीनियर रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में टच करूंगा इसको पूरी तरीके से, ऑल द एल्गोरिथम्स हैव अ पैरामीटर्स। पैरामीटर मींस दैट वैल्यू यू हैव टू एस्टिमेट ड्यूरिंग द, तो पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी? सो वंस द पैरामीटर्स आर ओनली सिंबल, थीटा 1 थीटा 2 भी सिंबल आ गया, दे डोंट हैव एनी, या रैंडमली कुछ। तो ड्यूरिंग training method try to every second, it try to every epoch, it try to develop the try to update the coefficient of weight वगैरह वगैरह एक ही नाम है, try to develop the adjust करते। value adjust कैसे होती है, that is the some set of value I have taken and I have to predict something as a supervised learning, the prediction was not correct, फिर कुछ change करेंगे, again I will with the new update weights we again make the predictions, again my prediction is how close to the real value, तो ऐसे धीमे 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 I want to update the weight in that direction, it will try to minimize the loss मतलब your predicted value or real value। so in algorithms having many parameters, many weights, many coefficients, that is algorithms, once algorithms become a model, coefficient का तो कुछ value दिखना start होगा, 0.2 0.5 0.8 0.8, that is the difference between algorithms and model। F means algorithm, X means data set।
अच्छा ये चलना चाहिए। ये आ गया सुपरवाइज तो हो गया था, तो देख लो। I am skipping that part. What is supervised, what is unsupervised learning? That section I am going to skip. That's okay, everybody. चलो ठीक है, मंगा लो, बीच में आ जाए, शेयर करना पड़ेगा। तो ठीक है। Okay, I hope the font are visible to everybody. Otherwise, the backend student please come and forward it. Data set, what the question about your data set? Okay. So whatever the data set you have given, if your algorithm is compatible with that data set, you can use any kind of. It is not like that data set is supposed to be like that. Compatibility means suppose the linear regression output variable always be continuous output. There is no such big constraint like. Okay. So we are going to study about the linear regression. It is very interesting, very much fundamental, and it is a backbone of the many advanced algorithms nowadays we are experiencing. Whether it is a deep learning or the neural network. The deep linear regression is a very much fundamental algorithm, and one of the algorithms that are mostly studied by the researcher, academicians. I think everybody who belongs to the data science might have used this algorithm, might have studied that's we call it very much fundamental, and everybody must have a basic understanding about it. So the linear regression is nothing but simply an equation of the line. I will try to connect from mathematical perspective to the data science. So linear regression is nothing but simply a line. Like y is equal to mx plus c, like 10th standard we are studying about the y is equal to m. आपको पता होगा y is equal to m. Where y something can't calculate based on m. m बोलते कहीं m means line angle with respect to the x-axis. ऐसे कुछ है m plus c. No, the intersection at the y-axis. इसको बोलते हैं अपन c. याद आ रहा है? y is equal to mx plus c. Here कहीं इसको वीडियो मैथमेटिक्स में y इक्वल टू mx प्लस c बोलेंगे, जैसे ही आप डेटा साइंस के बुक उठाना चालू करोगे ना, धीरे धीरे से उसका प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा. वी स्टार्टेड राइटिंग एट जीरो, या बहुत अच्छा बोलोगे थीटा जीरो, y इक्वल टू थीटा जीरो प्लस थीटा वन x1 प्लस थीटा टू x2 प्लस थीटा थ्री x3. यू कैन इंक्रीज एज नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव. क्या मैं धीरे धीरे आ रहा हूं. सो वेयर थीटा जीरो मींस स्लोप और एंगल विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस, एंड y the intersect of the y. ये मैथमेटिकली क्लियर. तो दैट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी. अच्छा, इसमें से एक चीज, तो y इक्वल टू b0 प्लस b1 प्लस x. समझना आप डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है. x मींस योर डेटा सेट. x मींस सिंगल फीचर ऑफ योर डेटा सेट. और अच्छा बोलूं तो बिकॉज देयर मे बी मल्टीपल x1 x2 complete data set nahi. Suppose your data set having a three features: age, weight, and height. Agree? Your data set Excel file having a three features: age, weight, and height. So B0 में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी थीटा जीरो है, प्लस B1 x1 मतलब B1 age प्लस
B2 height plus B3 क्या था weight. The moment you have as many as number of features, you can increase the value of x1, x2, x3, associating with some coefficient जिसको अपन B0 This is the equation with respect to the single features you have. क्या है आपके पास? Single features. Here regression is a predictive method. Means I want to predict. और समझना. By considering age, weight and height, I want to predict some property of the human. उसका BMI क्या है? मैं ऐसे hypothetical application. I want to predict the BMI. Yeah, particular disease is possible or not by seeing these kind of features. आपका blood pressure input हो सकता है, height हो सकता है, और blood related जितनी property आपके साथ. If you have a something as a input variable, by considering that input variable, I want to predict it. For simple example है, मैं बोलता हूँ, you have to create, जैसे आपसे पूछते हैं, suppose you are the teacher and faculty somewhere, assume that the particular student will going to be settled in the place of life or not. Hello, sir. Hello. Sir, slides are not visible. Slides are not visible. Screen sharing. Okay, 1 minute. Now my screen is visible to you, please. Hello. Yes, sir. Yes. Now Okay, it's fine. So what happens in Thank any you, kind of predictive data analytics? There are some input feature. Input feature की meaning समझना आपका लेकिन important चीज़ है. Input feature means that features you want to consider for some prediction purpose. Suppose I want to predict whether the student is going to be success in placement drive or not. क्या क्या important features हो सकते हैं? CGPA, academic record, technical skill, training, how many training he has done, internship, how many internship he had done, वगैरह वगैरह वगैरह. By considering that property, we have a better understanding whether the particular student is going to success in placement drive. Means output variable that you want to predict is depend on something. ये क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन इनपुट आउटपुट वेरिएबल कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्लासिफिकेशन से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है किसी. ठीक है, मींस आइदर क्लासिफिकेशन होगा या रिग्रेशन डजंट मैटर. एनी काइंड ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग ऑलवेज सिंगल आउटपुट वेरिएबल. आउटपुट वेरिएबल मल्टीपल नहीं हो सकता. ऑलवेज हैव अ सिंगल आउटपुट वेरिएबल and we have a n number of input variables. By using n number of input variable during the training, I want to associate output variable with the input variable. How output variable is depend on the set of input variable. और अच्छा बोलूं, I want to develop a relationship between output variable and set of input variable. ये जो relationship है ना, यही मॉडल है. और अच्छा कोई पूछे मॉडल इज अ रिलेशनशिप, बिल्कुल 100% है. मॉडल इज अ रिलेशनशिप. आप बोलेंगे रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप डिफाइन कैसे होती है? वही कोएफिशिएंट की वैल्यू जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग अपन टर्न करेंगे, वही रिलेशनशिप. y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू 10 प्लस 3x. सपोज मान लो आफ्टर ट्रेनिंग y इक्वल टू mx प्लस c, आफ्टर ट्रेनिंग वी हैव टू वैल्यू ऑफ सम m or c, y इक्वल टू 10 प्लस 3x. दैट इज अ रिलेशनशिप. सो मॉडल इज नथिंग बट a relationship between set of input variable and one output variable. If your model have that capability to find out that relationship in better way, you have a better model. If your relationship is weak, means you are not able to find out the relationship between input variable and set of output variable, your model performance वैसी है. So model is nothing but training. In training we try to estimate the value of coefficient. इसी को बोलते हैं रिलेशन. एग्री? So y is the output variable. Suppose BMI is output variable. You want to predict the BMI of a particular person, and age and weight and height is the input variable. So you want to develop a model such that it can establish a relationship between output variable and set of input variable. अब इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है समझना. इनपुट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही बोलते हैं. इनपुट वेरिएबल
independent variable y and output variable is a dependent variable. बहुत सारे बुक में लिखा होगा. Because y is the output variable that is depend on the input variable. Whatever the value you want to predict, that always be output variable. ये output variable आता कहाँ से? अगर नए लोग कुछ नए हो इस फील्ड में, whatever the data set was given, बहुत सारे फीचर्स दिए होंगे, उसमें से एक फीचर आउटपुट वेरिएबल होगा. Suppose data set was given this is, and last one it is cat, dog, cat, dog, cat, dog. तो दिया ना, it is cat, a dog है कि cat and dog है, या based on that it was suffered from heart attack, yes, no, yes, no, yes, no. So any of the variable in future you want to predict based on the input variable, we call as a output variable or dependent variable or target variable. सभी आता है target variable. Target variable, output variable, dependent variable always be a single. We have a multiple input variable. तो ये x है, ये input variable है, ये x1 है. अगर मैं अच्छा बेटर और अच्छा लिखूं तो b1 है. ठीक है. इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. एक्चुअली में इफ यू हैव अ सिंगल इनपुट वेरिएबल मींस यू आर ड्राइंग अ लाइन. अब क्वेश्चन आपका अभी तक मैं वेट कर रहा था, सर लाइन ड्रॉ क्यों करते हैं, लाइन की मीनिंग क्या है? ठीक है, उससे अगले स्लाइड में कवर करूंगा. सो इफ यू हैव अ सिंगल इनपुट वेरिएबल यू आर ड्राइंग अ लाइन. If you have a multiple input variable, you are drawing a plane or hyperplane. Okay. If x and y, x is an input variable, y is an output variable. So x आपके पास एक ही variable है, you want to draw a line. If you have a two variable, y is always y, x1 x2. 3D हो गया आपका. 3D में लाइन थोड़ी ड्रॉ करेंगे, प्लेन ड्रॉ करेंगे. जैसे वह प्लेन और हाइपरप्लेन वगैरह वगैरह. ठीक. मैं कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, फिर भी हल्का सा टच कर देता हूँ. मोर नंबर ऑफ कोफिशिएंट means increase the complexity of the model. Magnitude of each and every coefficient increase the complexity of the model. जैसे में complexity, you always try to avoid the complex model. Complex model are very sensitive against the input. Complex model always suffer from the overfitting. The overfitting, underfitting, अगर किसी ने सुना होगा नाम, so that is the basic of the model complexity. You always want very simple but हाई एक्यूरेट मॉडल. सिंपल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखो वो बड़ा ट्रेड ऑफ है. वेरी सिंपल मॉडल परफॉर्मेंस विल बी वेरी पुअर. वेरी सिंपल का मतलब समझते हैं क्या होते हैं? अगर मैं बहुत सिंपल बताने की कोशिश करूं, यू वांट टू प्रिडिक्ट अ गिवन स्टूडेंट विल सक्सेस और नॉट इन द प्लेसमेंट ड्राइव. केवल करेंट सेमेस्टर का सीजीपीए एज ए इनपुट वेरिएबल. ये ज्यादा बेटर है कि सीजीपीए ऑफ ऑल द सेमेस्टर बताऊंगा. सीजीपीए, हाँ, CGPA नहीं, SGPA की बात करूँ. Suppose students are in 6th semester or 7th semester and we have a result of up to the 6th semester. उसका 10th का रिजल्ट भी है, टेक्निकल स्किल कितना है, सब कुछ वेरिएबल काम है. लेकिन एज अ मॉडल आई एम गिविंग अ सिंगल इनपुट वेरिएबल द करंट सेमेस्टर या प्रीवियस सेमेस्टर SG एंड आई वांट टू प्रेडिक्ट द स्टूडेंट विद सक्सेस. ठीक है, ये सिंपल मॉडल हो गया. मॉडल को मैं कॉम्प्लेक्स करूँ, आई हैव अ डिटेल ऑफ ऑल द सेमेस्टर SGPA. मॉडल कॉम्प्लेक्स किया, परफॉर्मेंस अच्छी होगी नहीं होगी. You have a better understanding about the particular person. मैं उसको और कॉम्प्लेक्स करता हूँ. The student is very technical skilled. Yes, excellent. ये भी एक इनपुट दिया मैंने. You have a better understanding about the person. मैंने बोला he has done 5 internship in this area. तो और उसके चांस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? Means the moment you are including the new input variable means x1, x2, x3. The moment you are including the new variables means you are complex side to जा रहे. You are helping your training process to understand about the data set. So adding the new variable, मैंने बोला वेरिएबल ऐड नहीं करना. मशीन लर्निंग में 2 + 2 4 नहीं होता. मैं वैसे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अब देखो मैं भी क्या बोल रहा हूँ. The moment I will adding the new input variable, you might have better understanding about the data set. Adding a new variable always having a better performance of the model. Agree करते हैं? एक लिमिट के बाद इसका अपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको ओवरफिटिंग एंड में बोलते हैं. After some time, too much data set, too much features are given the model start getting confused. So in the real life, the performance will start degrading. इसको बोलते हैं underfitting, overfitting. Underfitting means too much simple model, overfitting means too much complex model. ठीक है, मैं बहुत डिटेल में जा रहा. So कोई थंब रूल नहीं है जो आप मेरे से पूछ लें या किसी बुक्स में दुनिया में लिखा हो.
सर कोई फॉर्मूला है वाई चेक ऐसे चेक करने या फीचर्स ऐड नहीं करने, कब रुकना है, कोई आंसर नहीं। इट डिपेंड ऑन द एल्गोरिथम्स, इट डिपेंड ऑन द डेटा सेट, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फीचर्स यू हैव एडेड, हाउ डिस्क्रिमिनेटिव ईच एंड एवरी फीचर इज। बहुत सारे क्वेश्चन है। फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग you might have developed today, adding the feature is also super duper important. When you supposed to stop is also a very critical learning you have to understand. ठीक, अब आप क्वेश्चन पहले से एग्री। ठीक है, आ रहा हूँ, मैंने पीपीटी में नहीं किया। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मशीन लर्निंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सुनना क्या है। पहले स्टैटिस्टिक्स होती ना, स्टैटिस्टिक्स लर्निंग या स्टैटिस्टिक्स काम करते थे। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कॉन्फ्रेंस में देखा था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग। ये क्वेश्चन अगर आपको आंसर पता है तो इनका आंसर पता चलता है। किसी को आइडिया है? बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है इसमें, बहुत फंडामेंटल डिफरेंस स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग। मैथमेटिक्स में मत जाना, बहुत सिंपल डिफरेंस है। किसी को आइडिया हो? कोई बुक में नहीं दिया इसका आंसर, सर्च करो, सब टेक्निकल आंसर दिए हों, तो आंसर समझना। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, अगर आपको याद हो, एक स्क्वायर है, मुझे एक्सीडेंट या कुछ एनालिसिस करना है, तो मैं क्या करूंगा, a person physically will go over there, stand whole day, he will try to write down on the data set इतनी टू व्हीलर्स निकले, इतने वन व्हीलर्स निकले, इतने इतने इतना इतने बजे से इतने बजे तक पूरी कहानी लिखी। in statistics whatever your objective data set are created in that way। बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। in statistics whatever your objective, first set the objective, based on the objective you need to create your data set। ऐसे होता है। मशीन लर्निंग में क्या डेटा सेट इसलिए क्रिएट होता है कि मुझे मशीन लर्निंग करनी है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई हैव डेवलप्ड दैट इंस्टीट्यूट, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हमारा सारे स्टूडेंट का डेटा मुझे मैनेज करना, सारे फैकल्टी का डेटा मैनेज। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल डे टू ऑपरेशंस आई वांट टू कैरी आउट, और ऐसा कोई डेटा सेट। मेरा ऑब्जेक्टिव मशीन लर्निंग है, करना है क्या उसमें? कभी नहीं होगा लाइफ, कभी नहीं होगा जिंदगी में, ऐसा कोई डेटा सेट दुनिया में डेवलप नहीं होता जिसको ऑब्जेक्टिव मशीन लर्निंग। कोई एक सिंगल एप्लीकेशन बता दो आप, कोई एक सिंगल एप्लीकेशन दुनिया की जिसका ऑब्जेक्टिव मशीन लर्निंग। Whatever the software data are being generated for particular objective, and machine learning is a byproduct based on the data set generated for that applications, I want to use that data set for decision making या कुछ optimizations के लिए। आप कोई सा भी डेटा सेट बताएं जो मशीन लर्निंग के लिए बनाया होगा, कोई सा भी सोच लें, सेंसर डेटा से लेके एक्सीडेंट, कोई सा भी डेटा से याद करें, वो किसी और पर्पज से बना होगा। अब मैं आपके आंसर में आ रहा हूँ। तो द डेटा सेट गिवन टू यू फॉर दैट एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। So that is the responsibility of the data scientist for your objective. Those features are important or not. अब मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे प्लेसमेंट, वही सिंपल एग्जांपल, द स्टूडेंट विल गेट प्लेस्ड और नॉट, ये मुझे पता करना है। डेटा सेट में मुझे रोल नंबर भी दिया है, दिया होगा नहीं दिया होगा, हॉस्टल किस हॉस्टल में रह रहा है उसका नाम भी दिया होगा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रोल नंबर ऑन द सक्सेस इन द प्लेसमेंट? अब आपका आंसर स्टार्ट हो गया, डिलीट। Whatever the PAN number of that student, delete PAN number is important for that objective, delete। ठीक है, उसका फादर नेम डिलीट, हॉस्टल आईडी डिलीट। तो मींस whatever the features are given to you, your question was that data set was given, that is the company, ऐसा कभी नहीं होता। Whatever the application that client are using, their total data set will be given to you। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या? प्लेसमेंट ड्राइव है ना, आपका डेटा सेट फीचर्स फिल्टरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया कुछ फाइनेंशियल, उसकी कैपेबिलिटी प्रिडिक्ट करना, पेन नंबर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है? द मोमेंट यू चेंज द ऑब्जेक्टिव, द इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर चेंजेस। माय ऑब्जेक्टिव इज द वेदर स्टूडेंट गोइंग टू बी हैव अ प्लेसमेंट ड्राइव और नॉट। यहाँ पर उसका पेन नंबर और ये और वो कितनी एफडी, अकाउंट नंबर वगैरह सब यूजलेस है। मैंने ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया। आई वांट टू एनालिसिस द परचेस पावर कस्टमर की, ऐसा कुछ कुछ हो गया, तो मुझे पेन नंबर के थ्रू मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसकी एक्सेसिबिलिटी है, सिविल स्कोर के क्या है। हाँ, तो आई मीन टू से डेटा सेट, व्हाटएवर द डेटा सेट आर गिवन टू एवरीबॉडी, इट इज नॉट लाइक दैट यू हैव टू यूज ऑल द फीचर। मेरे कहने का मतलब that's why data, as a data scientist you must have that understanding whether the given feature is important or not।
बिल्कुल फीचर डिलीशन होता है, जो फीचर इंजीनियरिंग पूरी बुक है, दैट इज वी कॉल फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग, so that we understand what are the some methods to apply to understand whether the feature is important or not. इसके अगेन एक चैप्टर खुल जाएगा, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हाउ डू यू आई नो वेदर द गिवन फीचर इज इंपॉर्टेंट और नॉट। मैं जैसे हम लोग प्रैक्टिकल देते हैं अपने बीटेक स्टूडेंट में, तो उसको टफ कर देते हैं। लर्निंग केवल लेक्चर क्लास लेवल पे लर्निंग नहीं होती। मैं कैसे करता हूँ, ऐसे प्रैक्टिकल दिया, रोल नंबर, पेन नंबर वगैरह वगैरह है। If I write this is the roll number, this is the pen number, this is the postal ID, by having the domain knowledge, you can take the decision this is important or this is not important, आप डिलीट कर दो। मैंने एक्सपेरिमेंट हम लोग बीटेक में चेंज कर दिया। अब हम फीचर का नाम बोलेंगे B1, B2, B3, B4, सारा डोमेन नाम हटा देंगे, सारा डोमेन नाम हटा दिए। अब आप पता करो कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है ना। टफ हो, नहीं हो गया। अब पोस्टल पेन नंबर का नाम, पेन नंबर है ये तो B1 है, एज B2 है, हाइट B3, अब कैसे करोगे? इससे क्या करना चाहते हैं हम लोग कि स्टूडेंट नो सम साइंटिफिक मेथड टू फाइंड आउट द गिवन फीचर इज इंपॉर्टेंट। तो अगेन वो एक पूरा चैप्टर है, पूरी एक कहानी है। तो वो आपको आंसर देगी कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, कौन सा बाहर निकालना है, कौन सा बाहर। बहुत बड़ी लर्निंग है। नॉर्मली क्या होता है, डेटा सेट किया, पैकेज उठाया, इंपोर्ट कर दिया, कुछ नहीं है ये मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं। वो तो पैकेज है, पैकेज तो टूल है। You have a 10 tools are given, 10 weapons are given. How to use which weapon in which condition, that you must. तो कहानी समझ में आ गई, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप पूरा अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। डेटा सेट इज गिवन, दैट इज नॉट मींस दैट ऑल द फीचर्स यू नीड टू कंसीडर, ऐसा कुछ नहीं। रियल यूसीआई के डेटा सेट अपन डाउनलोड करते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ होता है। कोई जरूरी नहीं है आपको सारे फीचर्स यूज करना। नेम ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो अब ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट समझना। क्वेश्चन आ रहा था, सर व्हाई इज लाइन, लाइन क्यों खींचना है अपन, या प्लेन, व्हाई वी नीड टू ड्रॉ प्लेन, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क हो, चाहे डीप लर्निंग हो। इफ द लीनियर रिग्रेशन काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर हैंडलिंग, यू आर ड्राइंग अ लाइन। ऐसा नहीं समझना कि लीनियर रिग्रेशन में ये लाइन ड्रॉ करते हैं। आइदर यूजिंग डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, द एप्लीकेशन इज लाइक अ लीनियर रिग्रेशन, यू ऑलवेज ड्रॉ लाइन और हाइपर, बिल्कुल ऐसे। अब इसकी मीनिंग क्या समझ, थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ। डेटा रिडक्शन पढ़ा होगा आपने, डेटा रिडक्शन, डेटा, बहुत सारे डेटा को रिड्यूस करना है मुझे, जैसे कंप्रेस करना, जिप करना, वन ऑफ द मेथड। लीनियर रिग्रेशन इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक यूज्ड फॉर डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन में न्यूमरसिटी रिडक्शन एक चीज है, न्यूमरसिटी रिडक्शन के अंदर भी दो पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक कैसे कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। The whole data you want to replace with something else that are in less in size, that is called data reduction. Then whatever the data set is given, I want to represent or transform that data into different form that are much less in the size. ये data reduction. अब data reduction का एग्जांपल समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैंने बोला व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया, सुना होगा आपने। व्हाट इज द एवरेज पैकेज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, वो क्या है? डेटा डेटा रिडक्शन है। वॉट एवर वन, जितने मिलियंस पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, सब कुछ इनकम है। इनकम का एवरेज निकाला अपन क्या बोलते हैं, पर कैपिटा। ऐसा बोलते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया, या एवरेज पैकेज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, ऐसा बोलते हैं ना। 10 लाख एलपीए, 15 एलपीए, 10 एलपीए 15 एलपीए है क्या? डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ। द होल डेटा आई एम रिप्रेजेंटिंग विद वन नंबर। ये एवरेज height of this class, this participant, suppose 5'6" inches. So every individual data, I am representing every individual data with the one number, that is the average of that class, 5.6. That is whole data I am replacing with the one number. But by using one number, I am representing the whole. Agree? और फिर वो क्लास लंबी हो जाती है। ये एवरेज लीनियर रिग्रेशन, कभी नहीं सोचा हुआ। एवरेज इज द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। कभी आपने सोचा है एवरेज निकालना है, जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल? फर्स्ट क्लास हमारी बीटेक में तो पहली क्लास होती है, एवरेज एज ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल। एवरेज इज अ मशीन लर्निंग मॉडल, और छोड़ो, एवरेज इज अ मशीन लर्निंग मॉडल, बिल्कुल मशीन लर्निंग मॉडल है, 100% मशीन लर्निंग मॉडल। कैसे, एक एक करके समझेंगे। एवरेज और मीन कहाँ से आया, बिना डेटा के आ गया? डेटा होगा तभी तो एवरेज निकालेंगे। मींस यू नीड टू हैव सम एवरेज ऑफ समथिंग, विदाउट द डेटा इट इज पॉसिबल। डेटा मशीन, हल्का सा टच हुआ डेटा है, मतलब मशीन लर्निंग आ रहा है।
अब y इक्वल टू mx प्लस सी दिमाग में याद करो, बोर्ड नहीं बड़ा मजा आता है। y इक्वल टू mx प्लस सी दिमाग में बना लिया आपने, m को 0 कर लो। अब क्या हुआ, y इक्वल टू सी, सी इज एवरेज, सी इज एवरेज। कैलकुलेट करने से सी इज एवरेज, तो y इक्वल टू सी, सी इज एवरेज इज अ मशीन लर्निंग मॉडल। बहुत अच्छी तरह ड्राइव होता है, मैं बहुत सारी स्टेप इसमें स्किप कर दूँ। सो यू ड्रॉ अ लाइन दैट m इज इक्वल टू 0 और लाइन, अच्छा चलिए समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, एवरेज और मॉडल की एक और प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मशीन लर्निंग मॉडल आपने कभी सोचा है विदाउट फीचर? दूसरा क्वेश्चन, एनी मशीन लर्निंग मॉडल दैट यू डोंट हैव एनी फीचर्स। अब बताओ, अब मुझे प्रेडिक्ट भी करना है, फीचर्स एक भी नहीं दूंगा मैं। एक्सेल फाइल जीरो इनपुट, जीरो इनपुट। सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। यू नीड, I have given a data set having zero input variable, मतलब एक आउटपुट वेरिएबल है। zero input variable मतलब एक्सेल फाइल ब्लैंक नहीं है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, एवरी स्टूडेंट एक ही रिकॉर्ड दिया है, दैट इज आउटपुट वेरिएबल। वी डोंट हैव इनपुट वेरिएबल। अब मॉडल ट्रेन आप समझना है, मैं इस मॉडल की बात, एक्स एक्सेस कुछ नहीं है, कोई इनपुट वेरिएबल नहीं है, एक्स एक्सेस को जीरो कर दिया मैंने, समझना। आपके पास क्या है, केवल वाई एक्सेस। यहाँ से मिनिमम वैल्यू जीरो, सपोज मान लो यहाँ से 100%। ये लाइन आप ये ड्रॉ कर रहे हो ना, ये बीच से लाइन ड्रॉ करो, बीच मीन्स 0.5 एवरेज। इट इज अ मशीन लर्निंग, इसमें से उसका एंगल जीरो हो गया, एंगल जीरो हो गया, y इक्वल टू m जीरो। सी इंटरसेप्ट एट द y एक्सिस, वो कहाँ से इंटरसेप्ट कर रहा है, एवरेज वैल्यू, जहाँ से एवरेज आए। तो मीन और एवरेज इज अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इज टिपिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। It is the input variable. Suppose simple case, it is the output variable. How input and output variable are related? But even शुरू से बोल रहा हूँ, how input variable and output variable are related. That relation is the model. ये बोल रहा हूँ मैं बार बार, that relation is the model. रिलेशन ही मीन क्या है, और मैं टिपिकल बात करूँ, रूट लेवल पे समझना। मशीन लर्निंग में कुछ भी पढ़ो आपको दिखना स्टार्ट होना चाहिए आंख में। मीन्स रिलेशनशिप मीन्स how these data points are moving here and there. That is called relationship. If x and y are positively related, तो ये डेटा पॉइंट कैसे दिखेंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे। If x and y means input variable, output variable are negatively related, कुछ आउटपुट ऐसा दिखेगा। That is called data distribution. Data are distributed like that, data are distributed like that, और ये दोनों टिपिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो डेटा मे बी लाइक, और मे बी मल्टीपल कर्व्स लाइक दैट। द मोमेंट यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, और रिलेशनशिप चेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो मीन्स हाउ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल आर, ये दिखता कैसे, मैं देखने की बात करूँ टिपिकल रूट लेवल पे, हाउ डेटा दीज ऑब्जर्वेशंस आर यू कैन विजुअलाइज, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। जैसे सपोज मान लो मसल्स पावर वर्सेस एज, मसल्स पावर ऑफ द ह्यूमन वर्सेस एज, तो ग्राफ कैसा होगा सोचो। the child is like very 1 month 2 month 3 month old, ऐसा कुछ है। तो x एक्सिस इज द एज ऑफ ह्यूमन, y एक्सिस क्या होगा सोचना। 1 month चाइल्ड की स्ट्रेंथ पावर क्या होगी, मसल्स पावर वेरी वीक। तो डेटा कैसे होगा, द मोमेंट यू इंक्रीज द एज, y एक्सिस की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी, फिर एक एज के बाद क्या होगा, जाना स्टार्ट होगा। तो दैट इज कॉल्ड रिलेशंस बिटवीन एज एंड मसल पावर, इसको बोलते हैं रिलेशन। If you have a such kind of model that can learn that distribution and that relationship, means you have a perfect model. मतलब मॉडल को पता होना चाहिए किस आफ्टर बियॉन्ड द सम थ्रेशोल्ड वैल्यू y की वैल्यू डिक्रीज होना भी स्टार्ट। तो ऐसे केस में आप दो लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना सकते हो, एक अप टू दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू, दिस सपोज वी एग्री दैट मसल्स पावर इंक्रीज अप टू द एज ऑफ 25 years, ये 30 years तक मसल पावर इंक्रीज होती है। So you have a two model. If age is less than 30, you use that model. If age is beyond the 30 or threshold 30, you should use that model.
ये कंपटीशन में बिल्कुल ऐसा होता है, जो आपके बीटेक वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं हैकाथॉन वगैरह में, वो डेटा सेट देते हैं, आंसर ही बोलते हैं। So that is freedom to you, whether you want to use single model, 2 model, 3 model, या ठीक है, या आपके पास पॉलिनोमियल मॉडल है, तो ऐसा मॉडल है जो ऐसा मूव कर सकता है। So I want to convey the crux of that discussion. Whatever the data set are given, that is not in your control. The relationship is not in your control. The relationship always be between the features. During training, you want to follow that. So relationship कैसे represent कर सकते हैं अपन? Lines. Agree? So that's why this is the linear regression. It is representing the whole relationship between input variable and output variable. रिलेशनशिप ये लाइन हो सकती है, ये भी हो सकती है, पर पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन एक वर्ड यूज किया था, वो ये हो सकता है। लाइन की जगह कर्व ड्रॉ करेंगे अपन तो उसको लीनियर रिग्रेशन ही बोलते हैं, बट पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियलिटी बढ़ जाती है। तो लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन बोथ आर सेम। लीनियर रिग्रेशन हैविंग स्ट्रेट लाइन, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन मींस कर्व, इतना ही फर्क है। लाइन इज आल्सो काइंड ऑफ कर्व, ऐसा कुछ नहीं कि लाइन नहीं। एग्री? तो मींस आइदर व्हेन आई स्टडी द लीनियर रिग्रेशन, व्हाट आई वांट टू लर्न how the input and output variable are related, इसको statistical machine learning में data distribution और typical में relation बोलते हैं। और how to learn that data distribution through the machine learning algorithms, वो कैसे कैसे data को distribute करना, whole learning को मुझे एक line से represent करना। क्लियर? मोटा मोटा समझ में आ गया होगा मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। बहुत कुछ ऐसे डिस्कशन करने के लिए अपन डिटेल में नहीं जा रहे, टाइम हो गया। चलो मैं आगे करता हूँ, जल्दी डिस्कशन करते हैं। So we have a basic understanding about the linear regression, data distribution, modeling वगैरह वगैरह वगैरह, अपन क्यों कहानी सब कुछ कर रहे हैं, सब समझ में आ गया। Now in the linear regression we have multiple training methods. Any other training method of your choice you can choose it. So next 15 to 20 minutes I am going to discuss about the least square method. Is one of the method that we can use of training of the linear regression model. ये डीप लर्निंग में यूज होता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर रिग्रेशन, समझना, बहुत लोगों के अंदर ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर रिग्रेशन, नो। लीस्ट स्क्वायर मेथड आल्सो यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क, आल्सो इन डिसीजन ट्री, आल्सो इन डीप लर्निंग, हर जगह लीस्ट स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द हाउ टू यूज द लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। मतलब ये पूरा आप इसे बोलते हैं ब्रेन। ये responsibility of the least square method is to find out that relationship. अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करें ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंक्शन का? So whatever the basic understanding we have developed, what is the relationship between input output variable data distribution, I want to capture it. Whom the task was given? ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड कौन सा है? ये लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये अपन को लाइन घुमा के दे देगा, वो लाइन कहाँ है ये अपन को बताएगा, एन की वैल्यू, सी की वैल्यू सब ये बताएगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? ग्रेडियंट डिसेंट भी इसके अंदर का पार्ट है, मैं भी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, सपोज एप्लीकेशन वाज गिवन, what is the size of house or flat, you can say this is the value of a particular property. So this is the output variable, this is the input variable. I want to predict the value of the particular price of the particular property, particular house, based on the size of the house. It's बहुत simple application. So it will be the output variable, it will be the input variable. इनके अंदर strong relationship है, ये आपको डोमेन नॉलेज है। The size of the house also depend on price of the house is depend on the size of the house, ये आपको पता है। ठीक है, ये डेटा सेट आपको दे दिया। ठीक है, that is the area of the house। वो जो टेबल दिया ना उसको मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। that is the area of the house, that is the size of the house, these are the individual values। ये कनेक्ट करते हैं, आपको कनेक्ट कर पाते हैं ये चीज को। सपोज हाउस साइज इज 500 स्क्वायर फीट, ऐसे सपोज मान लो दिस प्राइस इज 21 लाख, ऐसा डेटा सेट में होगा। तो दैट पॉइंट रिप्रेजेंट वन टपल। डेटा साइंस में टपल या डेटा ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट। ऑब्जर्वेशन मतलब कंप्लीट रो होता है। ठीक है, ये 2D है। अगर तीसरा फीचर्स का थर्ड फीचर, द मोमेंट आई विल ऐड इन दिस डायग्राम, अपन को प्लेन ड्रॉ करना है।
Clear? So these observations represent, these point represent complete row. Complete row is one tuple or observation. Clear? इसको देख के आप पता लगा सकते हो साइज ऑफ दैट डेटा सेट. मींस इसके पास 1 2 3 4 5 6 रोज, 6 रोज की बात कर रहे हैं. अपन समझ रहे हैं ना इसको अच्छी तरीके से. ठीक है. Our objective is to draw such line, that is red color line, that is my final objective. I want to draw it that will represent the relationship between input variable and output variable. ये line अपन को draw करना. ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने इक्वेशन लिख दी. प्राइस y is equal to mx plus c, ऐसा लिखा है. y is equal to b0 या θ1 plus x. तो प्राइस y is आउटपुट वेरिएबल प्लस θ0 या b0 बोलो प्लस θ1 इनपुट वेरिएबल आपके पास क्या है? एरिया. ऐसा x1 x2 x3. द मोमेंट यू इंक्रीज द न्यू इनपुट वेरिएबल यू कैन एक्सपेंड दैट इक्वेशन. ये समझ में आ गया आपको बहुत अच्छी तरीके से. Now what is your objective? The second objective is that whatever the relations, and this is the algorithm we have written. This is the algorithm, it is not a model. This is the algorithm I have mentioned. Here the output variable is the price, input variable is the area, and we have taken that discussion. I want to calculate the relationship between input variable and output variable, and this is the equation of the relationship. And here how many coefficients are there? θ0 and θ1 that you want to estimate. उसकी कुछ वैल्यू निकालनी है. θ1 θ0 θ1 are the coefficients. ये निकाल के कौन देगा इसका आंसर आपको? least square. That you are going to understand. The responsibility of the least square method is the best possible value of θ0 θ1. In that case our error will be minimum. It means whatever my model will predict the price of the house, what is the actual price of the house, that are very closely related, they are very close to each other. वो एरर बोलेंगे ना उसको सबसे कम होगा. ये पता कौन लगाएगा? लीस्ट स्क्वायर मेथड. पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. Okay, so initially the data set are given in that way. We starting from the scratch. The data set are given in that way. We need to draw a line. यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा. Mathematically पूछ रहा हूँ during because in machine learning we are going to have a training process. We need to draw a line. ठीक है. There is no human involved. The computer don't have any pen and pencil. तो line draw कैसे हो? कौन draw करे? तो बड़ा मजा आएगा समझने में. मशीन लर्निंग में कोई मेथड में आंख बंद करके पूरी पिक्चर दिखनी चाहिए क्या हो रहा है. पूरा एक लाइन दिखनी चाहिए कौन खेल रहा है कौन. Who will draw the line? यहाँ तो पेन में आप खींच लेंगे. वहाँ कौन है आपके लिए? ट्रेनिंग तो मेथड है. हु इज ड्राइंग? कैसे? हाउ ट्रेनिंग मेथड इज ड्राइंग द लाइन. एक्स की वैल्यू तो फिक्स है. एक्स की वैल्यू कैन नॉट चेंज. हाँ बोलो कुछ आएगा आंसर आएगा. धीमे धीमे ट्राई करो. हाँ ये θ1 और जो θ0 θ1 है ये दैट आर that you can tweak. इसको आप चेंज करना. अब समझना कैसे होगा. रियल में कौन ड्रॉ करता है वो समझने की कोशिश करना. You have a multiple way to draw a line. What line suggests? You have a two parameter to play with this example. आपके पास multiple input variable. One input variable that is θ1. One intercept that is θ0. आपके पास दो ही चीजें इसके साथ आप खेल सकते हो. आपके पास पैरामीटर. अब केस 1 आप एक पैरामीटर को फिक्स करो, कांस्टेंट कर दिया, मुझे कोई मतलब नहीं. समझना. Even you can change the line, you can draw the multiple line. What it says that this is the blue color line and this is the red color line, both having the same θ0 that is a slope. Agree? Okay, in the intercept is a constant. I am going to change the slope. Means you can keep the one parameter that is called slope by constant by changing the another parameter that is called slope of the line. You might have multiple lines. Means during training there is a least square method which may option 1
keep the intercept as a constant, it keep on changing the slope value. In every iteration, it change the slope. इसका मतलब क्या हो रहा है? In every iteration, it is getting the new line. Agree? That is the one way to draw a multiple line, because basic understanding, the data set was given, you can draw crores of lines. Agree? An actual real sense, the training algorithms draw thousands of lines. Real में जब बता रहा हूँ, it's a part of training I'm going to explain. So during training, really system draw multiple lines. ये बिल्कुल correct true है. तो कोई झूठा नहीं. So what I want to convey by saying that the system draw multiple line, okay, but how at the root level we can understand how the system is drawing multiple line. Case one, मैंने बताया आपको, keep intersect as a constant, change small changes with the slope value means you have a multiple line. बिल्कुल ऐसे हुआ. Another option is just opposite कर दो इसका. Means you can keep the slope constant by changing the intercept of the line. The result you have a multiple line. Agree करते हैं? ठीक है, ये भी हो गया. Third option, दोनों कर लो, आपको मना कर रहा है. Both the parameter you can change it. Means these are the three options where the linear play with the during the training, and by using three methods we draw a multiple line. Agree? मेरे कहने का मतलब ये था, अगर दूसरे में समझे. The data set was given x and y axis. I want to draw a line that best represent the whole relationship. ये objective है. That best represent the whole relationship. So we can draw such multiple lines, crores of lines, thousands of lines we can draw with that context. Everybody agree? First, we need to understand, yes, it is possible, and mathematically, conceptually, how during the training method system draws such multiple lines. So mathematics behind it, I think everybody clear it. How mathematically it is happening during the training, how the least square method is going to do with this one, by changing the value of all the coefficient. यहाँ दो थे multiple coefficient हो सकते हैं. By playing with the changing of the multiple coefficient, result with the multiple line. Clear? एक problem solve हो गई. How to draw the multiple line in the given. ठीक है. अब second problem आई. Yeah. Which is the best one? Clear? Second problem. We have a multiple line. Which is the best? क्योंकि select तो एक ही करना पड़ेगा ना आपको. Then we are going to discuss about that one. So this diagram again is very important to try to understand. This is the data point. यहाँ समझना. These white color are the real data point. Means it says that how to read that diagram. If the size of the house is 1000 square feet, its price is around 35 lakh. Agree? लोगों का दिमाग इधर-उधर हो गया है. चलो इसी के लिए बहुत चाहिए था. चलो ठीक है. So again, you see that the table that a real data set was given. The size of house is 1000 square feet. Its price is 35 lakhs. So this represents the size is 1000 square feet and the price is 35 lakhs. Similarly, each and every observations are represented with the white color points. यहाँ से agree कर सकते हैं. Case 1, this is the line you have drawn. Suppose that is a line 1 you have drawn. Similarly, line 2, line 3, line 4, line 5, and number of lines you need to draw. So line 1 I have drawn. अब उसको check करना पड़ेगा क्या करना. So that we have a multiple way, we have multiple time to check the performance of each and every line. This line की performance the best one I will declare as a best line of final model. This line represented by this one. Suppose theta 0 is 4 and theta 1 is 0.02. That represent that line. Agree? These are the real values. These are the target values. Okay. By this line, assume that it is my final product, final model. By that model, I want to predict something, or I can predict something. So by that line, I will predict here itself. I will check my prediction how close to the real value. Okay. So line से prediction कैसे निकालते हैं बताइए. So in real sense, what will be the input value? X. Size of the house will be input value.
I am not considering any of this parameter. This is the final model I am considering. The input value I am 1000 square feet. ये ऊपर के लाइन में टच किया, इसके ऊपर नहीं जाना पड़ेगा. And corresponding y-axis is the value predicted by that time. मॉडल को यूज कैसे करते हैं प्रेडिक्शन के पर्पस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ. X is the input value. You draw a line, a point. When it touches to the line, corresponding y-axis is the value that is predicted by that line. Agree? Real value is this one. For 1000 square feet as an input, real value of real price of that house is 35 lakh. But what my line is predicting, 25 lakh, 25 lakh के आसपास. Agree? Similarly, for that point, 1200 square feet, real value is 46,000. 46 lakh जो भी हो. What my line is predicting, to be यहाँ पर to be 30, 34, 35 के आसपास. This represents the error. Means what my line is predicting, what is the real value or target value, the difference between these two are the error. Every observations will contribute some error. ऐसा कोई observations होगा जो error contribute नहीं करेगा. Error may be 0. If case 1 is this point is the same as it is, so error contributed by that point will be 0 because target value and predicted value are. पहला concept समझना. Every observations will contribute some error. Error may be 0. Agree? यहाँ तो कोई confusion? Second, error may be negative and positive. यहाँ पर confusion? These are the positive error, these are the negative. error का कोई भी formula आप ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता. Predicted value minus actual value. कुछ actual value is more than predicted value होंगी, कुछ actual value is less than predicted value. या formula उल्टा कर दें. Actual value versus predicted value. दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता. So error will be negative and positive also. Plus 0. Agree करता. So now we have understood how to calculate the error given by each and every observation. Now I want to attach the error with the line as a performance measure. I want to understand the performance of the line by seeing the total error. Total error means I need to add all the error. Means error given by all the observations means if somebody will say this is the line, your model, whatever the total error given by that line, this तो कुछ plus कर देंगे, it will give the sum total error of this. Problem आ गई कि some errors are negative, some errors are positive. So they may cancel each other. So that is misleading. So one of the solution is that we can square each and every error, then sum it. Okay? That is called sum of squared error. मैं आ रहा हूँ उस पे. So that is the error, how to calculate mathematically. This is the real price of the house, that is called target. That is the value predicted by your model, and subtract the error between predicted value and a target value, that is called the error. So that is represent the error. Agree? Some errors are negative, some errors are positive, and that is the common formula. I think everybody know it. Total error is square of each and every error and the sum. That is called sum of square error. SSE बोलते हैं, कहीं बहुत सारे नाम हैं. ठीक है. So that is called sum. सबसे common नाम है sum of square error. Each and every error I square it, then sum it. Square क्यों करते हैं? सबको आंसर क्लियर हो गया? क्यों करते हैं? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने. मोड भी तो ले सकते हैं. क्या प्रॉब्लम? पूछो. स्क्वायर क्यों करते? If it is a reason, because there is some negative errors, I want to make it positive. अगर ये real reason है, तो उसका काउंटर क्या हो सकता है? स्क्वायर क्यों किया? इसकी पावर 4 क्यों नहीं कर दी? x2 की पावर स्क्वायर है ना, x2 की पावर 4 क्यों नहीं करी? या why not we have taken the mode only? बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, अपने पे टाइम नहीं है, इस पे भी डिस्कशन करते हैं. Again, very detailed understanding you require it for understanding why we are going to having square it. When you are going to use the package में सब ऑप्शन मिलेंगे. आप मोड भी निकाल सकते हैं. Sum of absolute error बोलते हैं. यहाँ sum of squared error है. If you try to use the package, you change the default error calculation method. That is called sum of squared error. You may change it sum of absolute error. Absolute error means mode.
इसकी पावर स्क्वायर क्यों है, 4 भी कर दो, ठीक है। तब देखना फर्क क्या आएगा, देन दैट विल बी द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन। अगर ये क्वेश्चन का आंसर अगर अपन वी कैन फाइंड आउट व्हाई नॉट एब्सोल्यूट, व्हाई स्क्वायर, व्हाई नॉट की पावर 4, व्हाई इट इज नॉट पावर ऑफ 8, ये समझ में आना स्टार्ट। मैं हल्का सा हिंट करते हैं फिर आगे चलते हैं, समझ की कोशिश करना कितने को समझ में आता है। What is the final objective of the training? I want to minimize error. Agree? Which point you will give the more focus, which are giving the small error or which are giving the huge? किस पे ज़्यादा focus करो? Some observations are there during the training. Some observations are there. Suppose this observation is so very close to the real value. Means the error given contributed by the particular observations are very small. मतलब लगभग वो real value के बराबर. So during training, you want to focus on such points that are contributing very less error, or on which point which are contributing the higher error. किसमें ज़्यादा फोकस? हायर एरर, क्योंकि अगर हायर एरर को रिड्यूस कर दिया आपने तो ओवरऑल एरर ऑटोमेटिकली रिड्यूस। एग्री करते हैं सब लोग? इसमें कोई डिस्कशन, कोई कंफ्यूजन? लाइक सपोज यू आर द टीचर, यू वांट टू फोकस ऑन द स्टूडेंट्स व्हिच परफॉर्मेंस आर वेरी मच पुअर, so already having a good student you don't need to focus it because already they don't focus on, तो थोड़ा सा एवरेज से दूर, इनसे दूर है। अगर उनको अपन ने कंट्रोल किया, ओवरऑल रिजल्ट ऑफ योर क्लास विल बी हाई। एग्री करते हैं? ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज मशीन लर्निंग को कैसे समझना होगा, ये करना है तुम्हें। मशीन लर्निंग को क्यों बोलते हैं? मशीन लर्निंग इज अ मेथड और समथिंग दैट ट्राई टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन। सो ह्यूमन बीइंग एज ए यू हैव अ नॉलेज, because these are the observations that contributing the higher side error, I want to control। या मेरी लाइन, कहने का मतलब है the line is very much away all those point, ऐसे कहने का मतलब है technically I want to shift my line that will close to the observations that are giving higher side error, ताकि लाइन के पास आ जाए और वो जो कंट्रीब्यूटिंग एरर है वो कम हो जाए, तो ओवरऑल एरर कम हो जाएगी। एवरीबॉडी एग्री विद दैट वन? दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। ये नॉलेज मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये तो आपको पता है, तो आपको पता है ना, सिस्टम को कैसे पता चले? सोचो, सिस्टम में तो फोन करके अपन नहीं बताएंगे ना कि ऐसा करना है आपको। उसका आंसर है स्क्वायर। स्क्वायर करने की मीनिंग समझना क्या होता है। सपोज दिस एरर इज 4, दिस एरर इज 8, और समझ, दिस एरर इज 2, दिस एरर इज 8। ये 2 किलोमीटर, इट इज 8 किलोमीटर। इसको स्क्वायर करो, कितनी वैल्यू आ रही है? 4। 8 को स्क्वायर करो, कितनी आ रही है? अल्टीमेट दिस ऑब्जर्वेशन इज कंट्रीब्यूटिंग 4 कुछ क्वांटिटी एंड अदर ऑब्जर्वेशन इज कंट्रीब्यूटिंग 64। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग किसमें ऑटोमेटिक फोकस जाएगा? 64 में फोकस आने की मीनिंग क्या है? यू आर फोकसिंग ऑन दोज डेटा पॉइंट्स दैट आर गिविंग मोर एरर। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं तो 2 वर्सेस 8, केस 1 2 वर्सेस 8, 4 वर्सेस 64, क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस समझ में आ रहा है? आई एम इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। मेरे कहने का मतलब है आई एम इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन बाय स्क्वायरिंग इट। स्क्वायर नहीं करेंगे मींस यू आर नॉट इंक्रीजिंग द ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस इंक्रीज नहीं करेंगे, ट्रेनिंग उस साइड देखेगी। समझ में आया अच्छी तरीके से? अब मैं इसको 4 स्क्वायर किया है, मैं 4 कर दूं तो ये आप दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, सर स्क्वायर क्यों करें, तो 4 कर दो 8 कर दो। यह भी यहाँ भी एक बैलेंस है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट गिविंग टू मच फोकस ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट, पूरी ट्रेनिंग डाइवर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट डेटा पॉइंट। और वो डेटा पॉइंट आउटलियर्स भी हो सकते हैं, आउटलियर भी हो सकते हैं। तो मीन्स you need to do something in balance. So literature says that, experiment says that if you square it you will get a decent output। ये अपने प्रैक्टिकल में भी करके खुद देखो, अगर इसके बाद प्रैक्टिकल है करके देखना, स्क्वायर करके देखना, ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल के देखना, एब्सोल्यूट करके देखना, ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल के देखना, 2 की पावर 8 करना, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना मॉडल की, पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। So that is the real reason। If somebody asks why squaring, by squaring we are giving the more focus, more importance of those points that are giving the more or contributing more।
ताकि वहां फोकस करके रखो, थोड़ा सा कम करो। ये इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। बाकी कई आंसर है, स्क्वायर करने से वो डेरिवेटिव्स इजी हो जाते हैं वगैरह वगैरह, ये भी कई आंसर मिलेंगे आपको। लेकिन कॉन्सेप्चुअल आंसर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, हाउ टू गिव द मोर इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा पॉइंट्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग द मोर इन द मेन पॉइंट। तो 11:30 अब कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बता देना कब रोकना है। बस बस सर, बस so that is a formula, simple formula I have written. That is a complete formula. So y hat means predicted value, that is the actual value, that is a predicted value, square it, sum it, m total number of observation. ये फॉर्मूला सेम वही सम ऑफ स्क्वायर एरर का कंप्लीट फॉर्मूला लिखा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम है, कहीं कहीं ये सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ही बोलते हैं वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। चलिए खत्म कर देते हैं सर इसको। That the example I have taken single input variable, अब कोई अंडरस्टैंडिंग टफ नहीं बची। If you have a multiple input variable, you increase the new variable. Instead of drawing a line, you need to draw a plane. ठीक है। Similarly, you have a more number of parameter. Earlier, theta 0 plus theta 1 area. Now you have a one number of parameter. Number of bedroom also important to estimate the price of the house. भाई आप same area है, दो घर में number of room कितने? It's also a parameter. So the moment you increase the more parameter means more parameter you are including into the equation, that is called relationship between input and output variable. So now we have a 3 variable to estimate, theta 0, theta 1 and theta 2. अब आपके पास 3 वेरिएबल आ गए क्योंकि ये 3D हो गया है, ठीक है। सेम अगेन इधर यू नीड टू कैलकुलेट, यू हैव टू स्क्वायर इट, सम इट वगैरह वगैरह। अब मैं इसमें नहीं जा रहा अभी, पॉलिनोमियल आगे कवर करते हैं ना, ठीक है। सो I will continue that lecture. I also plan to cover the classic logistic regression. So after that 10 tea breaks, we will continue our lecture. Thank you. Comfort.
Please come for one photograph. Short session. Okay, so welcome you again for day 3, session 2 of this 1 week long FDP. And the session 1 was totally dedicated on the linear regression. And we have taken all the aspect of linear regression and we have understood all small things, what is relationship, what is data distribution, what is model,
what is coefficient, how to train the model like that. So whatever the method we have discussed, we call it least square method. My name is given the least square because whatever the error we have calculated, we want to minimize. We want to make it least possible. The name was given the least square method. Sum of square error, I want to make it the least. In case I have clear है, that's why we call them the least square method. Okay, so now one of the flavor of the linear regression, but most of the literature surveys and books and videos, lecture videos, it was given the polynomial and linear regression is some different algorithms. They want to predict, they want to present as a different algorithm. Right? It is the one of the flavor of the linear regression. What is the meaning of the flavor? We try to understand it, why we call it the polynomial linear regression. So first we understood in which condition typical linear regression fail, or which kind of situations data sets are there where we should not use the linear regression, we should use a polynomial linear. We starting with the limitation. In such kind of condition, linear regression we should avoid. Polynomial linear regression is supposed to continue. यहाँ से start करें. So always you try to develop your understanding about the data set. We give more focus on always algorithm. आपके साथ भी ऐसा होता ना? I learned this kind of algorithms. मुझे ये भी आता है, that is not right. Proper understanding should be on the data. Data set is the primary thing. Algorithm is not primary. Because algorithms are the tools that you may have a mastering, but you don't know which kind of platform, which tool you're supposed to use. The answer is given by the data set. Data set have all the answers. Whatever the tool you have mastery on those tools. Which tool you're supposed to select? That answer given by the data set. Again, I'm starting with the data set. Suppose this data set is given where age and the salary in 1,000 is something, two variables are there. Agree? So based on the age, suppose I want to predict the salary. Condition is that based on the age, I want to predict the salary. Normally, by seeing this table, you think it is a very simple problem, sir. We apply the linear regression and we will have answer. You can do it, but before finalizing your decision whether you should apply the linear regression or polynomial kind of thing, you must understood the relationship between input variable and output variable. From the starting of the previous lecture, I am focusing on that point. Once you plot the relationship between input variable and output variable, you have an understanding whether the linear regression is the correct choice or not. So you can see the relationship age and the salary. The relationship is not a straight. Everybody agree? It's going straight. After some threshold value, it becomes very stable. It is not increasing with the increasing value of the x-axis like that. So if you have that prior knowledge about the property or characteristics of the data set, you have a better understanding about the algorithms that you have in your control you should apply on. So suppose this kind of situation is given to you. That is the correct curve that represents the relationship between input variable and output variable. Everybody agree? If you want to represent that relationship through a one curve, ये ठीक दिख रहा है. That is the correct curve. ऐसा कुछ बोलेंगे that's supposed to be a correct curve to represent the whole distribution of the data. Everybody agree? It is not a line. Also agree. So if you try to draw a line, you can. Nobody going to stop you. In machine learning, there is no such kind of error. This data set was given where the data distribution was not linear. This input output variable was not linear. Even you are drawing a linear line, nobody going to stop you. ऐसा कुछ नहीं आएगा. There is no error. You can draw, you can run, it will be the model. But that model performance was not good. और performance measure बहुत सारे हैं. I'm not going to discuss like R square, adjusted R square, बहुत सारे performance measure है. One of the performance measure is sum of squared error. यदि तो performance measure होगा, in that case sum of squared error will be higher side. Clear? ये higher side है, ये पता कैसे चलेगा? पता क्या चलता है? ये तो relative term है. ये कोई absolute term थोड़ी है. कि दूसरे वर्ड में क्वेश्चन पूछता हूँ.
सम ऑफ स्क्वायर एरर 0.5 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए कि 10 होना चाहिए, क्या होना? मेरे कहने का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर एरर 1 इज गुड और बैड, ऐसा क्वेश्चन। सम ऑफ स्क्वायर इज 1, इट इज गुड और बैड। केस 2, सम ऑफ स्क्वायर इज 10, कौन सा अच्छा है? एक ही डेटा सेट नहीं, डेटा सेट अलग है, एप्लीकेशन अलग है। इन वन एप्लीकेशन सम ऑफ स्क्वायर इज 1 and another application sum of square is 10, which is good? कौन सा अच्छा है बताओ? बताओ। ये आंसर क्या है? अब जानबूझ के चुप हो तुम लोग कि अरे यार मुझे मालूम है 10 वाले आंसर कुछ ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। आंसर पता है ऐसा क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है, मैंने बोला इफ द सम ऑफ स्क्वायर इज हायर साइड means whatever the linear model you have selected was not good। ये मैं बोलता हूँ हायर साइड है, ये पता कैसे चलेगा? कोई वैल्यू नहीं है कि 0.5 से ऊपर कुछ होगा मीन्स हायर साइड है, ऐसा कुछ नहीं। टोटली डिपेंड ऑन द डेटा। इन पर्टिकुलर डेटा सेट 0.5 here is maybe huge, ये भी हो सकता है, और इन पर्टिकुलर डेटा सेट 10 error may be the best one। अगर 10 error आ गई तो एक नंबर बोला सम ऑफ स्क्वायर error 10, if you achieve it, it is the best one। ऐसे बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा। जैसे आई वांट टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कितना टफ है मींस अगर इफ यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर आपका प्रेडिक्शन 80% भी या 70% इफ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट समवन बिहेवियर, यू विल बी ग्रेट वन। सही है कि नहीं? तो 70% एक्यूरेसी विल बी वेरी वेरी ग्रेट एक्यूरेसी इन दैट, बिकॉज डेटा सेट इज वेरी रैंडम। Data set is very random. There is no limited number of fixed parameter can define the nature of the human। कुछ है और सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, खासकर कि आपको एग्जाम्पल देना चाहिए। बोलते हैं यार बच्चों को कैसे पालते हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों को कैसा पालना चाहिए? कोई रूल है कि इफ यू डू सच एक्टिविटीज योर सन एंड डॉटर विल बी ग्रेट वन, ग्रेट सक्सेस? कुछ है ऐसा? कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है that is so much effective। बहुत से घर मिलेंगे मदर फादर पता नहीं क्या है, उनके बच्चे कलेक्टर बन गए, बहुत से घर मदर फादर डॉक्टर हैं, बर्बाद हो गए। सही होता है ना? मींस इफ you are able to find out such parameters where that guarantee if you follow it your son and daughter 70% chance will be like that, तो great achievement है कि नहीं? So in that case 70% accuracy is very great। दूसरे केस में if you want to predict some disease of particular person, so 98-90% accuracy, 95% accuracy is very poor accuracy for disease prediction। Yeah, image recognition, whether it is cat and dog kind of things, I might have experienced where 95-96% accuracy is poor। So I want to convey the meaning with that by seeing only the accuracy, only the SSE without considering the nature of the application cannot take any। कहाँ से स्टार्ट हुआ था अपना डिस्कशन? If the error is higher side means the linear regression model you should not consider। The error is higher side कोई बताएगा नहीं, कहने वाला खाली सुनाने का मतलब देता है, ऐसा कुछ नंबर नहीं। That your understanding is like that you have to try linear regression model, polynomial regression model, hit and try many ways, which model give you the better performance you should consider that। ऐसा कुछ होता है। मेरे कहने मतलब था how you will know whether the given applications whether it apply the linear regression model or polynomial, nobody is going to tell। मेरे कहने मतलब था hit and try। कुछ signals हैं। Signals means if you draw a data set relationship between input output variable, if relationship is not straightforward, that is the one way you can directly know the relationship is not straightforward, you should not go with the linear regression model। कहने की मुझे polynomial model, ये थोड़ा सा आपको सेंस मिलता है। पूरी कहानी समझ में आ गई है? So in the given data set that where the variables were not linearly correlated, even you can draw a linear regression line, it will give you the some model, but model will not be satisfactory। So answer is that
you should try the polynomial version of the linear regression. Polynomial version means the degree of any input variable you have to increase it. In the given data set, theta 0 plus theta 1 age plus age square. The moment you increase the degree of polynomiality means now you are drawing a curve. You are not drawing a. The degree of polynomiality is such that you have to play with that one. It will start following the data distribution. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर एज की पावर 2h की पावर 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, अंडर रूट भी कर सकते हैं, सब कर सकते हो. Whatever the formula you can apply अंडर रूट ऑफ द एज, स्क्वायर ऑफ द एज वगैरह जितने भी दुनिया के तरीके, लॉग लगा दो, लॉग एज लगा दो, सब लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो. ठीक है. और तब करें इस चीज को, इट कैन बी एज स्क्वायर, एज टू पावर 3, लॉगरिथम ऑफ एज, अंडर रूट ऑफ एज, सब कुछ कर सकते हैं, एक साथ सब कर सकते हैं. The moment you can include any of the term that you want. यहाँ क्या चीज हो रही है? You have a single input variable that is the age, but you have multiple terms. Linear regression में क्या हो रहा था? If you have a age, you have only age x. You have only one input variable. But here single input variable, you have multiple terms. Age, age square, age to power 3, log age और under root age सब कर सकते हैं. That create a complexity in the polynomial regression model. क्या करूँ? कहाँ रुको? एज स्क्वायर, एज टू पावर 3, अंडर रूट और लॉग वगैरह वगैरह क्या करेंगे अपन? कोई रूल नहीं है. सबसे टफ कंडीशन ये, देयर इज दैट विल गाइड यू अप टू दिस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियलिटी यू शुड ट्राई. या इतना करना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं. हिट अगेन, हिट एंड ट्राई. कोई आंसर ये आपको हो सकता है, क्वेश्चन सर कैसे करें? हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई. एज टू पावर 2 करके देखें, 3 करके देखें, 4 करके देखें वगैरह वगैरह, सब कुछ करके देखना है. यहाँ फिट बैठेगा वहां. Hit and try, hit and try, hit and try. So the summary of total discussion is that, ये देखो कितने ऑप्शन हो सकते हैं मेरे बताने की कोशिश की. मीन्स मॉडल फिटिंग इज नॉट अ इजी टास्क. मैं बार बार बोल रहा हूँ. इन दिस केस यू हैव 2 इक्वेशंस. ऐसे 10 इक्वेशंस राइट कर सकते हो आप इन सेम डेटा सेट. कौन सी इक्वेशन आप सेलेक्ट करोगे? ये कहाँ तक राइट करनी है आप? इट विल डज सोल्यूशन विद with your experience, with hit and try. Again, you need to consider model is simple or complex. More degree of polynomiality, again complex model. जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियलिटी मतलब कर ऐसे से करना स्टार्ट हो जाएगा. मींस अगर इसकी मीनिंग क्या है? इफ यू ड्रॉ दिस कर्व और कॉम्प्लेक्स लाइन लिख लो, तो कर्व स्ट्रेट लाइन इज वेरी स्मूथ कर्व, then some small curve, then more number of degree means more zigzag kind of curve will be more complex model. So that thing you also consider when you supposed to stop, when you supposed to start, which is the balance way to consider all those things. It comes with the hit and try. Means it is the problem of bias and variance or underfitting over. It comes with the experience. There is no straightforward solution of that. Hit and try. फिर भी कुछ गाइडलाइंस हैं. थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ, ज्यादा मैं नहीं चाह रहा. So how to choose the degree of polynomiality? That is the very I mean to say that very non-technical solution. There are other solutions out there, but people follow it. So one of the solutions is that forward selection and backward selection. Forward selection means you keep the simplest model first, degree of polynomiality 1. You train the model in the given data set, see the performance. You increase the degree of polynomiality, again you have a different independent second model. You again train the model and see the performance. Again increase the degree of polynomiality, again see the performance. Like that you have a forward selection, means one by one, you keep on increasing the degree of polynomiality, and after some time what you need to consider. यहाँ सबसे important discussion ये है, ठीक है, सबसे important discussion. तो complexity का solution भी समझ में आ जाएगा, complexity कब रोकते हैं. आपके पास दो थिंग है. You are increasing the complexity of the model by increasing the degree of polynomiality, or by adding the new variable. Agree? Now you have to see the performance hike given by the newly added variable. If newly added variable
is contributing enough in the performance, that variable you should consider, otherwise variable is not important. तो आपको stop करना है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? The moment you are adding the new variable or degree of polynomiality, the consequences will be the increase in the performance. SSE बोले या accuracy बोले, classification सम में ये concept है, ठीक है सम में। The moment you increase the one variable or by degree of polynomiality, it will contribute something. It will increase the performance. यहाँ performance increase का मतलब है SSE decrease, ठीक है? So if whatever the newly variable I have included, it is not contributing much. It is not reducing the total SSE. मतलब इसके आगे मुझे नहीं, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियलिटी स्टॉप हो गया। 1 में आ गया, 2 पे 3 पे 5 पे कहीं पे जाने, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तुम लोगों को नहीं, यही प्रॉब्लम है, ठीक? वो मैग्नीट्यूड मैंने कहाँ बताया, तो पता क्या चलेगा कि 2 किलो की 2 kg परफॉर्मेंस हाई करना है कि 1 kg करना है, कौन कहाँ पर रुकना है, उसका भी कोई नंबर नहीं है। अगेन मीन्स आई एम सेइंग द परफॉर्मेंस हाइक इज नॉट इनफ, ऐसे वर्ड बोला। Whatever the newly added variable is not contributing a lot या not contributing enough, वो enough क्या है, कितना है? SSE 10 थी, उसको 8 करना है कि 9 को भी enough बोलेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पता कैसे चलेगा कि this much of magnitude और impact on the accuracy is enough or not? ये enough or not क्या होता है, ये कैसे पता चलेगा? आप दिमाग में लगा लेंगे कि जैसे मैंने इंक्लूड किया SSE में डिफरेंस 10% का आना चाहिए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं 10% कहाँ से आए, 5 का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, कितना डिफरेंस होना चाहिए? मीन्स वंस यू इंक्रीज द इनपुट पैरामीटर, परफॉर्मेंस हाइक है ना, मिनिमम कितना होना चाहिए मेरे कहने में? गाइडलाइन है क्या इस पे? अगेन इट इज ओपन। Everything I am trying to touch that increase your understanding about the machine learning, calling the package, importing the data is not a machine learning. बिल्कुल नहीं है मशीन लर्निंग। लोगों के अंदर मस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, डेटा लिया ट्रेन किया और मॉडल, कुछ नहीं, ठीक है? इस समझ में हर चीज के अंदर ब्लैक पॉइंट बने हुए, ब्लैक स्पेस उसके आगे, कुछ नहीं पता। जैसे मैं नहीं पता इंक्रीज द हाइक ऑफ द परफॉर्मेंस कितनी, इससे ज्यादा हाइक नहीं हुआ तो रुक जाऊंगा, वो डिफाइन नहीं है। अगेन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, ठीक है? इसमें मैथमेटिकली जाएंगे तो बहुत आंसर है। बैन फॉर्मनी टेस्ट होता है, एक नेमनी टेस्ट होता है, का नाम सुनाओ, वो अपन नहीं निकालता, ठीक है? मैंने एक डिस्कशन ओपन करके छोड़ दिया, इसको ध्यान रखना सब ना। बैकवर्ड सलेक्शन का अपोजिट है, randomly you choose as per your experience highest degree of polynomiality. age to the power 20 से start करना है, highest degree suppose now. So you need to develop a model where age square is to the power 3 up to age 20, ठीक है? You train the model, see the performance. अब एक एक करके डिलीट करना स्टार्ट करो, age to the power 20 remove it, remaining model आपको अगेन ट्रेन करना है where the variable will be age to the power 90. वो परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन देखना है कितना होगा। If degradation is very nominal, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो age to the power 20 was not important बता दो। But the moment you have removed the one of the variable from the any of the model, impact is considerable degradation in the performance, means that variable was important, आपको remove नहीं करना। कैसे स्टार्ट होगा? age to the power 20, suppose that was not important, so degradation in the performance was very nominal, 19, 18, 15 करते you have to stop in that variable where the degradation will be more than that something कुछ नहीं, clear? That is called backward selection. थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें बैकवर्ड फॉरवर्ड सिलेक्शन। समझ में आया? कोई क्वेश्चन इसमें? क्वेश्चन भी तुम्हारे जगह में ही पूछ लेता हूँ ना। चलो ठीक है, इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, सो दैट वाज, इसको बड़ा ठीक है, इसको नहीं करना है, एक पेज ही है, हटा दो। नहीं सर, मैं वो चश्मा ले रहा था। अच्छा, मैंने कहा इसको लग रहा है कि पीपीटी, ठीक है। So that was the second session of this, that was the first session of that discussion where we have
taken the understanding about the linear regression, whatever the possible time was given to me, I have tried to convey each and everything that normally we don't find in the books, videos, and lectures. Mathematically discussion, code, everything will be there. What I tried to cover all those points that I thought of to convey to you. Similarly, the second half of this talk, that is like second lecture, was totally based on the logistic regression. अच्छा linear regression और regression classification फर्क तो पता था ना सबको. In the regression, your output variable will always be continuous variable. Means whatever your output variable, that y, it will be age, salary, वगैरह वगैरह, where what you want to predict some number. That is a regression kind of problem. Other kind of problem where the output variable always be a categorical variable, like cat and dog, happy, not happy, yes, no, वगैरह वगैरह. So that is called classification. So the linear regression is for the regression kind of problem. Logistic regression is for classification. Logistic regression से लोग confuse हो जाते हैं, इसलिए इतना focus कर रहा हूँ मैं. The moment we will see the logistic regression means you think about that, it is for the regression problem. Logistic regression for the classification purpose. What I thought of covering, introduction with example. Example skip कर सकते हैं अगर आपको पता हो. Then mathematical idea behind the logistic regression, that is a sigmoid curve or sigmoid function. I will try to introduce. Then how to train it. What is polynomial logistic regression? Role of cutoff value. That is most important. I will try to cover what is the cutoff value and how to decide it again. Again, if I ask the question when I introduce the cutoff value, normally by default cutoff value is 0.5. 0.6 क्यों नहीं है, 0.4 क्यों नहीं है, होती भी है, करते भी. ठीक है, कैसे करते हो देखेंगे. कंफ्यूजन मैट्रिक्स बहुत जल्दी कवर करेंगे. देन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि शॉर्ट मैक्स फंक्शन वगैरह पढ़ाना पड़ेगा, फिर इतना टाइम नहीं है अपने पास. ठीक है. ये हुआ. मैं इसको स्किप करता हूँ जल्दी से. Okay, some of the examples I have taken to make it clear what is the classification. That examples will try to make you better understanding what is the classification. Suppose problem was given like that. Predicting whether a given flight will be delayed or not. Answer yes, no में. If flight is delayed by 5 minutes, 10 minutes, then it is a regression problem बन जाएगी. It is not classification problem. Answer will be flight will be late or not for 10 hours या 1 minute late, ये नहीं बताया. If such kind of answer is that, it is a classification problem. If we try to predict the flight is delayed by 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, then it is a regression problem. Okay. So flight will be delayed or not, that you need to predict based on the input variable like distance between origin and destination, departure time, रात में flight चल रही है, early morning में है, इस पे depend करता है. Climate condition, name of the carrier, ATR छोटे वो ज़्यादा लेट होते हैं क्योंकि they are very much influenced with the weather और turbulence बहुत होता है. Heavy बड़ी flight होती है वो. Means many input variables are there. Based on that, you want to predict whether the given flight will be delayed or not. That is a kind of classification problem. Which insurance is most likely to be fraudulent? Means you have made the claim. Claim property or detail goes to the model. Model will predict whatever the claims coming in that it suspected or not. ऐसा कुछ बताएगा. So it is again kind of classification. The answer will be yes or no. Based on many parameters. बहुत सारे आपकी इनकम जो क्लेम कर रहा है उसकी सिचुएशन, फैमिली इनकम वगैरह वगैरह कुछ ही पैरामीटर्स हो सकते हैं, अपन वो नहीं जा रहे. We can design a system whether the particular person will donate or not, particular person will purchase or not. I want to float some advertisement to the Facebook user. It is not right way to float advertisement all the Facebook users. पहली बात तो वो feasible में कितना Google will charge, I don't know, but I should target someone. Okay,
means I have introduced some new electronic TV or related product. If I know these are the set of Facebook users that normally purchase electronic items, only those users I was supposed to target. ऐसे कुछ होता है, बोलते हैं ना इसको टारगेट एडवर्टाइजमेंट. आपके पास भी आता हो, आपकी फेसबुक में अलग एडवर्टाइजमेंट आता है, मेरे में अलग आता है, कई रीजन हो सकते हैं इसके पहले आपने क्या एक्सेस किया वगैरह. So similarly, the person will donate or not, person will purchase or not, वगैरह वगैरह वगैरह. Answer will be yes and no. Again, is a classification problem. इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं ना, तो फिर मेन चीज रह जाएंगी. ठीक है. So that was the example of the logistic regression. I hope everybody know the meaning of the classification. That's why I am not coming on those points. Directly jumping to the example. अब example से लेके चलते हैं. ठीक है. Suppose this data set was given to you, where the age is input parameter, salary is input parameter, repaid means 0101 means 1 means it has repaid the loan already in the historical record. 0 means it was defaulter, ऐसे कह सकते हैं ना, he paid or not kind of thing. Clear? So 0 means it has defaulter, 1 means he has successfully paid the loan. Agree? अभी मैंने क्या बताया था आपको कि in classification output variable is a categorical variable. बोला ये आउटपुट वेरिएबल कैटेगरिकल वेरिएबल है क्या? 01 क्या है? 01 तो न्यूमेरिक नंबर है. बहुत अच्छा डिस्कशन है, इसमें अभी समझ में आएगा. हाँ बोलो आप कैसे क्या पता चला कि ये कैटेगरिकल वेरिएबल और ये मैं तो वाला न्यूमेरिकल वेरिएबल है. 0 क्या होता है? अभी चलते हैं, आपका अभी आता हूँ मैं. हाँ ठीक है, आप बताएं आपके रीजन दे देती. अच्छा बाइनरी में ये तो आप जानते हैं, सिस्टम को कैसे पता? ये तो आप जानते हैं. ये 3 भी होती, 01 3 भी होता तो आपका आंसर क्या बदलता? चलो ठीक, अननोन तीसरा वेरिएबल डाली मैं. अब बोलो आपका आंसर बदल गया. ठीक है, आप पे बात करते हैं. you say 1 means pay, 0 means not paid, ऐसे बोलो. ये तो आप जानते हैं ना, सिस्टम को कैसे पता? हाँ ठीक है, मान लिया. ये तो डेटा सेट ऐसे ऐसे के चढ़ा देंगे बंदों. हाँ एक्स है ना, एक्स इनपुट वेरिएबल हो गया ना. नहीं ये वाई है, चलो ये तो वाई है. अब बताओ. हाँ हाँ ठीक है. नहीं मेरा क्वेश्चन अभी भी हटा है. सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स गोज टू कैटेगरी 1. रुको क्वेश्चन आ रहा है तो मैं प्रिसाइजली चल जाएंगे धीमे धीमे. 1 इज कैटेगरी, मशीन को कैसे पता चले? मशीन के लिए 1 नंबर तो 1 है ना. अच्छा इसको दूसरे में क्वेश्चन कुछ समझ में आ जाएगा. यस नो कर. ठीक है, हटा दिया 1 0. यस नो कर. तब तो मजा आ गया आपको. ठीक है ठीक है. ट्रेनिंग नहीं समझना अपन को. फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. यहाँ यस नो लिखा है, ये कैटेगरी है कि स्ट्रिंग है? चलो और टिपिकल क्वेश्चन में आते. ये कैटेगरी है कि स्ट्रिंग है? हाँ बताओ. वाई यस वाई एस ये स्ट्रिंग और कैटेगरी. अब आंसर आएगा, धीमे धीमे आएगा आंसर आएगा. यस और नो इधर स्ट्रिंग और कैटेगरी. ये बताओ कैटेगरी कहाँ है? स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग कैटेगरी में जमीन आसमान का अंतर. बताओ मैं क्या कन्वे करना चाह रहा था. आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे ना उतने आप उस स्टेज में आ गए कि मैं क्या क्वेश्चन पूछना था. मशीन को रियल में नहीं पता कि वाई यस और मीन की कैटेगरी. मशीन को नहीं पता. अगर नहीं बताओगे तो डिजास्टर है. ये आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा. ये आ रहा हूँ धीमे धीमे. अब मैं कहने का मतलब चलो छोड़ो. इसके अंदर एक और वेरिएबल होता है नेम. चलो अब आप समझ में आना स्टार्ट हो. इसके आगे एक और वेरिएबल है नेम. ठीक है, नेम कैटेगरी है कि स्ट्रिंग? आपसे आंसर पूछूंगा.
आप इसको भी कैटेगरी बोल रहे थे, यस नो लिखा है ना, रीप्लेड यस नो यस नो यस नो, अभी आप कैटेगरी बोल रहे हैं। मैंने यहाँ नेम लिख दिया, विवेक तिवारी सब, ये क्या है? ये भी कैटेगरी है। मशीन के लिए क्या फर्क पड़ेगा यस नो और नेम में? बताओ बताओ, मशीन को कैसे, ये वेरिएबल कैटेगरी है, ये नहीं, रियल में नहीं पता हो। Explicitly you have to convert your variable whether it is a categorical, whether it is a ordinal। मैं धीमे धीमे आता हूँ। कैटेगरिकल ऑर्डिनल में क्या फर्क है? ऑर्डिनल वेरिएबल भी होते हैं ना, इसमें ऑर्डर होता है। थोड़ा चेंज कर, सपोज मान लो हाउ द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, ये मुझे बताना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? सेटिस्फाइड, एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर, ऐसा कुछ है, फिर ऐसा कुछ मल्टीपल वैल्यू। इट इज नॉट अ कैटेगरिकल वैल्यू, इट इज अ ऑर्डिनल। कहने मतलब है इफ कैटेगरिकल वेरिएबल जो इंडिविजुअल नंबर, इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना, एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर, दीज आर द लेवल सब कैटेगरी। अगर इस सब कैटेगरी में ऑर्डरिंग कर सकते हो आप, तो इट इज कॉल्ड ऑर्डिनल वैल्यू। मींस एक्सीलेंट इज नंबर, तो बोलोगे ना, देन एवरेज, देन पुअर। मींस अंडर द कैटेगरिकल वेरिएबल if the labels you may have ordering, means it is a ordinal variable। अगर उसके अंदर ऑर्डरिंग नहीं है, जैसे मेल फीमेल में क्या ऑर्डरिंग है, इट इज नॉट ऑर्डिनल वेरिएबल, इट इज अ कैटेगरिकल। हेयर ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन है, इसके अंदर क्या ऑर्डरिंग है? मतलब मीनिंगफुल ऑर्डरिंग है। ऑर्डरिंग का मतलब ये है बाय सीइंग द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द कैटेगरिकल वेरिएबल may have a some better understanding, then it is called ordinal value। अब एक्सेल फाइल में तो लिखा नहीं है कि कैटेगरी का ही ऑर्डिनल है, ये तो आप जानते हो क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग। मशीन को कैसे पता? सो बिफोर अप्लाइंग योर डेटा सेट टू द मशीन, each and every variable you have to convert। अब क्या बताना चाहते हैं? ऑल आर बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग। आपको डेटा सेट अपलोड करना, मैं वो कोडिंग में नहीं आया, मेरे को कोडिंग भी है, वो कोडिंग बच्चों से कराते हैं। बाय डिफॉल्ट ये अपलोड द डेटा सेट, अब स्ट्रिंग 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 करके आया। Explicitly you have to convert whether you want that data set as a ordinal variable, whether you want data set as a which feature as a category। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा explicitly। so जब मैं इस पे 10 लिखूंगा तो इसको कन्वर्ट करूंगा, आई विल से दिस 10 एज ए कैटेगरिकल वेरिएबल। जैसे ही मैंने 10 कैटेगरिकल वेरिएबल कोड में लिख दिया, then 10 is not a numeric 10, मतलब 1 + 0 = 1, ये नहीं होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करके दो। इफ यू डोंट कन्वर्ट, you assume that it is 1 and 0 as a category variable। machine don't think like that। बस कैसे चेक करना है मशीन नो एंड अंडरस्टैंड एंड नॉट, आप डेटा से अपलोड करना 1 + 1 करके देखना। मींस दिस रो दिस सेल वैल्यू, दिस रो दिस सेल वैल्यू, अप्लाई द मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस। अगर 2 आंसर आ गया मतलब मशीन इसको कैटेगरी वेरिएबल नहीं लेगी, ध्यान रखना। अगर 2 आंसर, अगर आंसर आया अननोन अनडिफाइंड, मतलब वो कैटेगरी। फीमेल प्लस मेल ऐड करो, क्या आंसर आना चाहिए? यस नो का आंसर क्या आना चाहिए? तो नहीं आना चाहिए ना। दैट वे यू नीड टू रीच इट। ये अपन नहीं डेटा से उठाते हैं, इंपोर्ट करके चलाते हैं, ठीक है? करके देखना। वंस ट्रेन योर डेटा सेट विदाउट चेंजिंग द वेरिएबल, देन एक एक करके किसी को ऑर्डिनल बनाना जो ऑर्डिनल हो, किसी को कैटेगरी क्रिएट करना, यू विल सी द मैजिकल डिफरेंस इन द। उसको पता है ना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट हु विल परचेज, इकोनॉमिकल स्टेटस इज रिच, पुअर, वेरी पुअर, ऐसा कुछ, ठीक है? समझ में आया? यू डोंट डिक्लेयर दिस वेरिएबल एज ए ऑर्डिनल वेरिएबल, ये वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग। मशीन कैन नॉट लर्न दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज, तो रिच पर्सन कैन परचेज। ये आपके अंडरस्टैंडिंग मशीन की नहीं है, क्योंकि मशीन को पता ही नहीं है दिस रिच मींस दैट रिच, ऑर्डरिंग में नंबर 1 क्या बोलेंगे, ये तो आपको पता है। So how to convey your knowledge to the machine? By saying that this variable is the ordinal variable where number 1 means which, number 2 means वगैरह वगैरह। Then machine start thinking which means it can handle, it can purchase। करके देखना है बात। ऑर्डिनल वेरिएबल को सिंपल वेरिएबल लेना, परफॉर्मेंस देखना, ऑर्डिनल वेरिएबल को ऑर्डिनल वेरिएबल लेके देखना, फिर परफॉर्मेंस बहुत चेंज। Because it is not easy to transfer your domain knowledge to the machine knowledge। इतना easy नहीं सबको लगता है, हम सोचते हैं ट्रेनिंग में सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ट्रेनिंग को भी आपको हेल्प करना है।
by designing such things. ठीक है, ये 1 2 से मुझे ध्यान आया, से मैं डिस्कशन कर लिया, आगे चलते हैं। मैंने कैटेगरी वेरिएबल कर दिया है ना, वो कैटेगरी वेरिएबल। So I want a function such that function means any of the algorithm that will take input as a age, salary या और कोई भी वेरिएबल होते हैं, सारे वेरिएबल will take as a input, where salary will be output variable, age as a input variable, सारे वेरिएबल को लेगी। It will do something where age and salary you will predict, it will purchase the output variable, it will repay or not, ऐसा कुछ आंसर। ये अपन ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे हैं। I want a black box where input will be given age and salary, output will be non will be paid or not, ऐसा बता। एग्री कर रहे हैं? ये समझ में आया पूरा? तो ये ब्लैक बॉक्स है, दैट इज क्लासिफिकेशन। ब्लैक बॉक्स इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। ये है क्या? ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर। अल्टीमेट आई वांट अ सिस्टम, any of the black box method, take the classification method, where the input will be given, it will give you some probability. It will give you some probability. Probability range from 0 to 1. Agree? 1 का मतलब यहाँ क्या होगा? Probability 1 आगे इसका मतलब क्या है? आप इंटरप्रिटेशन बताएं। ये रीपे करेगा। ये तो आपको पता है, सिस्टम को कैसे बताया? पॉजिटिव ट्रू है। ये आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम देता है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं कि 1 का मतलब इट विल नॉट रीपे, ऐसा भी पॉसिबल है। मेरे बार आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो, मेरे कहने का मतलब है व्हाटएवर द आउटपुट वेरिएबल बाइनरी क्लासिफिकेशन, यस और नो, ए बी यस नो बोले से गलत नहीं करती, ए और बी बोलो। A is a positive class, B is a negative class that you can define in the code. अगर मैंने इसको पॉजिटिव क्लास डिफाइन कर दिया, then it means higher probability will go to that class. अगर मैं इसको नेगेटिव कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसके लिए वो मीन्स नो के लिए प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा होता है, तो बाय डिफॉल्ट अपन करते नहीं, इसलिए पता नहीं है। तो मान के चलते हैं if the probability is higher side means it will pay, otherwise it will not repay. ठीक है, now you need a function that give you output in term of probability. ऐसा कौन सा फंक्शन है? आपको इनपुट पता है, आपका आउटपुट पता है। now you need a function in mathematics, याद करो which functions have that capability to give you input of any range, minus infinity से infinity it will be the input, output 0 to 1 के बीच में। ऐसा कौन सा फंक्शन है? sigmoid लिखा हुआ था। property of the sigmoid is that whatever the input you are giving, the range will be minus infinity to plus infinity, output क्या देगा वो? 0 to 1। that property of the sigmoid function is very much suitable in my requirement, तो मैंने वो फंक्शन ले लिया। वो sigmoid फंक्शन ही आपका लॉजिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये कुछ है, मैं से बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। दैट इज योर फंक्शन। इसकी वैल्यू 0 to 1, बहुत डिस्कशन में नहीं जा रहा मैं, ये बड़ी मजेदार है। ये देखो आप सब, ये इक्वेशन लीनियर रिग्रेशन की है कि नहीं है? क्या लिखा? देखो ये 1 है, डेटा सेट का कोई मतलब नहीं है। दिस इज 1, डेटा सेट का कोई मतलब नहीं है। इसे डेटा सेट का मतलब पैरामीटर का है दैट आई कैन चेंज, वो कहां है? पैरामीटर आर θ0 plus θ1 age plus θ2 salary, दैट इज द लीनियर। इसीलिए इसका नाम बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आल्सो ट्राई टू ड्रॉ लाइन। बहुत कम बुक में दिया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आल्सो ट्राई टू ड्रॉ। अब आपका कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, फिर लाइन का मतलब यहाँ क्या है? ठीक है, बंदी मुझे बताओ। so that you can relate with this formula, it also try to draw। अब वो लाइन कहाँ ड्रॉ करती है? अगर मैं डेटा सेट को विजुलाइज करूँ, डेटा सेट हैविंग द 2 class, पॉजिटिव क्लास, नेगेटिव क्लास, it will try to draw a line where one side of the data set must belong to the class A and other side must be belong to the class B। तो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है आपको? लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है? Similarly we can have multiple lines, same concept रिपीट कर रहा हूँ, we may have multiple lines। I want a line in such space where the accuracy will be high, means if data points are in the negative class it must be below the line, if data points are in the positive class it must be above the line। कुछ ओवरलैपिंग भी होगी, मिसक्लासिफिकेशन होगा, वो रहा। तो try
visualize in the logistic regression in the classification we also draw line. वो लाइन को अपन क्या बोलते हैं? Separating line या separation बोलते हैं, जो दो फ्रेम को सेपरेट कर देती है. One side all the observations of the positive class, one side of the during model. So model is with you. Now you want to use your model. You have to feed the data, the model theta 1, theta 2, theta 1. If output is below the line means it will not repay. If output is above the line, कुछ ऐसे होता है. ठीक है. ये लेक्चर कितने बजे तक है? ठीक है, ठीक है, अभी तो टाइम को. हाँ नहीं इसमें ठीक है. This is the algorithm. This is the model. Yes, I mean to say that was the algorithm I have taken. I have trained the model. Theta 1, theta 2, theta 3 कुछ भी. ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन को विजुलाइज कैसे करते हैं मेरे कहने का मतलब पीपीटी से दिखाने. In the logistic regression, we also try to draw a line. It's also same number of parameters. We try to estimate the parameter during the training. कुछ ये है. Journal form लिखा हुआ है. Basically, have a more number of parameters, you can increase the equation. कुछ नया कुछ इसमें. अब और टेक्निकल नहीं जा पा रहे. इस चीज को टेक्निकली लॉजिक बोलते हैं. Logistic regression, if you try to mathematically, if you go into the detailed discussion, the line equation inside the logistic regression is called as logic. अब इसके अंदर फिर बहुत सारी कहानी अपन उसमें नहीं जा रहे हैं ना. लॉजिक में ऑड रेशियो वगैरह सब इसमें आएगा ना. ऑड रेशियो पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में. रेशियो ऑड ना सुना, वो सब इसके अंदर आएगा. अपन उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अपन उसको सब स्किप कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है, ट्रेनिंग पे आते हैं डायरेक्ट. That was a data set we have taken, and that is the equation we have taken. Data set having input variable age and salary. Output variable is either 0, either 1. So what I was discussing over there, that was the data point. Data points represent only the labels. Label means either red color points are no or black color point are yes. Means जो last observation, last categorical variable था 0, 1, that I am representing as a color. और जो इसकी relative positioning है, that is all the other parameters. That is the relative position. तो इसमें कुछ ही मान लें, इसमें कुछ लिखा होगा रेड कलर का मतलब क्या है वगैरह वगैरह कुछ लिखा है इसमें. चलिए बी को 1 बोल रहे हैं ना. फाइंड द रेड कलर पॉइंट आ रहा पॉजिटिव क्लास यहाँ बोल रहा है. ऑल द रेड पॉइंट प्रोबेबिलिटी इज नियर टू 1. All the red color points represent they will repay yes. That's why probability is 1 or near to 1. All the black color points are the negative class. They will not repay. Probability will be 0 or near to 0. Borderline भी है. All the borderline cases probability will be 0. इसमें एक और डायग्राम होगा, उससे क्लियर होगा होना चाहिए. चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ इसको समझना. बड़ा इंटरेस्टिंग. अब समझना है ये क्या है. ओके, पर दो केस. केस 1 all the red color point. Case 2 all the black color point. Is all the observations. Okay, all the आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब ऑब्जेक्टिव में है. आपका ऑब्जेक्टिव ये है, इफ आई फीड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. अभी जीरो भूल जाओ. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये आपका पूरा मॉडल यही है जहाँ पैरामीटर्स है. What you want, if I feed all the data points in the equation, दो इक्वेशन तो नहीं हो सकती. मॉडल तो एक ही होगा, ध्यान रखना. वो दो लाइन अलग अलग लिखी है, मॉडल एक ही होगा. दिस बोथ आर आइडेंटिकल. दोनों एक ही चीज है. अगर आप ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, बोथ आर द सेम इक्वेशन. The same equation having a dual engine. I want the kind of equations that having a dual engine. कैसे नेचर होगा dual?
If I feed the red color data points to that equation, it will give some probability देगा वो पूरा formula या fit करेंगे, it will give probability. Probability always one close to 1. इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ close to, मतलब 0 से काफी आगे होना चाहिए, close to 1 कहने. Case 1, same equation, input is the observations of the positive class, output should be close to 1. Same equation, if the input is the negative class, your output always try to close to 0. Same algorithm dual, ये पकड़ना है, ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव है, अभी आएगा कैसे अपन नहीं आ रहा, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है. और जो डेटा पॉइंट्स लाइन के ऊपर होंगे, अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लाइन के ऊपर होंगे, प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, लिखी नहीं है आगे ना. वो देखते हैं, अभी करते हैं डिस्कशन. हाँ यहाँ पर आता है, ठीक है. सपोज मान लो ये ना, सो दिस इज द फाइनल मॉडल की बात कर रहे हैं, कैसे आया बाद में बात करेंगे. सपोज दिस इज द फाइनल लाइन, दिस इज द फाइनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. What it says that if you feed the red color data points to that equation, suppose that this is a final equation, final model, मतलब θ1 θ2 की वैल्यू आपके पास आ गई तो फाइनल मॉडल. If you feed the observations of the negative class to that model, इसकी probability higher side होगी 1, close to 1, ideally 1 होनी चाहिए. मैं ideal केस बात करूँ, it should be probability 1 और दूसरे केस में probability 0, क्या close to 1 0. अब समझना, these are the observations that are much away from the line, means their probability is always 1 and close to 1. ऐसा होगा, मैं आ रहा हूँ देखिए. Those data points that are again negative side, it too much away from the line, means probability is 0 or close to 0. जितने दूर है लाइन से, that is your ideal. आप कैसा केस चाहते हैं कि कोई भी डेटा पॉइंट लाइन के आसपास नहीं हो. एग्री करते हैं? लाइन के आसपास का मतलब ये है कि these all data points almost have the equal candidature to be belong to the negative side of the equation. बिल्कुल बॉर्डर पे कि पे भी करेंगे नहीं भी कर सकते, दोनों केस हो सकते. मेरे कहने का मतलब है केस 1, ईयरली इनकम इज 10 लाख रुपए और उसने 20 करोड़ का कोई खर्च, ठीक है. दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव साइड. इफ ईयरली इनकम इज 10 लाख रुपीस, ही हैव परचेज 20 करोड़ का हाउस, वो भी पे नहीं कर पाता. तो ये कौन से डेटा पॉइंट्स हैं? ये वाले जो बहुत दूर है, ठीक है. इसका अपोजिट, अंबानी ने 10 करोड़ का घर ले लिया, तो ये कौन सा साइड है? वाले साइड. एक बीच के भी आएंगे जो ऐसी कंडीशन पे रीपे कर भी पाएंगे, नहीं भी कर पाएंगे, ठीक है. एज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन यू डोंट वांट सच काइंड ऑफ, तो इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग, या तो टोटली साइड हो या टोटली साइड हो, बीच में कुछ नहीं. ये तो आइडियल कंडीशन तो मिलेगी नहीं आपको, तो आइडियल नहीं. अगर ऐसी कंडीशन मिल गई मीन्स एक्यूरेसी है, अगर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं. इसमें भी ऐसा दिखाया, ऐसा भी नहीं मिलता, कुछ ब्लैक कलर के पॉइंट यहाँ भी होंगे, कुछ रेड कलर के पॉइंट यहाँ भी होंगे, अदरवाइज नहीं तो एक्यूरेसी 100%. छोटा डेटा सेट है तो एक्यूरेसी 100% आती है, नहीं बोल रहा है नहीं आती, बट इन रियल सेंस एक्यूरेसी अचीविंग टू 100% इज आ गया. तो दीज आर द डेटा पॉइंट्स दैट आर क्रिएटिंग द प्रोबेबिलिटी. एग्री? जितनी लाइन के पास होंगे रीपे कर भी सकते हैं, नहीं. हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछो, जोर से पूछो. हाँ 100%. मेडिकल पे आ रहा हूँ, 10 मिनट रुक जाओगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है. ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं अभी, चलो क्लियर हो. सब क्वेश्चन है, मैं आ रहा हूँ. वहाँ प्रेसिडेंट भी कॉल आएगा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है. अभी अभी आंसर है, ठीक है.
कॉन्सेप्ट समझ गए अपन? 0.5 क्या है? ये क्या है? कट ऑफ वैल्यू। कट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? इफ you are defining in the code given input, it will calculate the probability. आपका पूरा मॉडल है, यही लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, यही एल्गोरिथम है, कुछ नहीं। If probability is 0.5 or greater than 0.5, I will call it will predict. 0.5 को बीच में नहीं रखते, एक साइड कर देते हैं। 0.5 or greater than 0.5 is the probability of the given input, I will say it will predict. Otherwise less than 0.5, I will say it will not. ये 0.5 को कट ऑफ वैल्यू बोलते हैं, we call it as a कट ऑफ वैल्यू या थ्रेशोल्ड भी कहेंगे। कि बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है? 0.5। आपका आंसर धीमे धीमे आएगा, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं और चेंज होता है। कैन सेट इज एज ए 0.8 पॉइंट एनी नंबर यू कैन सेट बिटवीन 0 to जो भी आप चाह सकते 0.3 कर दें, मींस एनी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.3 इन रीपे और लेस देन 0.3 विल नॉट। 0.8 कर दें, मींस वैल्यू ग्रेटर देन 80% प्रोबेबिलिटी इट विल रीपे, 79% विल नॉट। बिल्कुल मॉडल ऐसे करना चालू कर देगा, जो भी वैल्यू आप सेट कर दोगे उसके नीचे वाली को नॉट रीपे, अदरवाइज रीपे। बिल्कुल वैसे एग्री कर रहे हैं? आगे कहीं दिया है वो डिस्कशन? मैं आ रहा हूँ उस पर। तो दिस द केस वेयर इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल, ऐसा कर सकते हैं। आपको प्लेन वगैरह ड्रॉ करना है लाइन की जगह, तो सेपरेट करेगा। तो वापस इसमें आ रहा हूँ, ये बहुत अच्छा डिस्कशन है। अब उनका क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं आ रहा हूँ इसके लिए। तो वापस इस पे आएंगे। कौन है घर पे? तो नहीं है? हाँ चलो ये डिस्कशन करते हैं, ये मेडिकल के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट कट ऑफ वैल्यू इज 0.5 इफ probability is greater than 0.5 equal to 0.5, I will say yes or class 1 or repay. अब क्वेश्चन ये है डिसाइड कैसे करना है, ठीक है? Why 0.5 ओनली? कोई आंसर देगा? फिर अपन धीमे धीमे डिस्कशन करते हैं। ये 0.5 कहाँ से आया? पॉइंट कैसे आया? 0.5 ही क्यों है? चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। इन योर मॉडल यू ऑलवेज वांट द हाईएस्ट एक्यूरेसी। इसमें कोई डाउट है किसी को डिस्कशन करने के लिए? Whatever you are doing, कुछ भी करें मुझे कोई मतलब नहीं, डेटा सेट में सब कुछ कर लिया। What you want? A model with the highest accuracy. यहाँ पे you have trained 3, 4, 5 kind of model by changing something. What model you will? इसकी accuracy सबसे highest। ऐसे कुछ है ना? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गलत है। ऐसा मत सोचना कि मॉडल विद द हाईएस्ट एक्यूरेसी विल बी द बेस्ट। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अभी एग्जांपल समझ लीजिए। Again, I am going to repeat. Model with the highest accuracy is not always the best model. ठीक है? ऐसा नहीं है। हम ऐसे if in given situation, in given this situation, if cutoff value is 0.5, the model will give you highest accuracy. उस कंडीशन, उसी एक ही मॉडल की बात कर रहा हूँ। In the model, cutoff value is 0.5, उसकी accuracy highest होगी, कुछ भी करो। जैसे ही मैंने इसको 0.49 किया, 0.51 किया, एक्यूरेसी कर दूंगा 100%, कोई डाउट ही नहीं है। मैंने कोई मॉडल, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझना, आई एम नॉट कंपेयरिंग माय मॉडल विद अदर्स, आई एम नॉट रीट्रेनिंग एनी अदर मॉडल, सिंगल मॉडल आई हैव। इफ माय ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन द हाईएस्ट एक्यूरेसी, आपका अगर ये ऑब्जेक्टिव है, देन कट ऑफ वैल्यू ऑलवेज 0.5, बिल्कुल थंब रूल है। यहाँ 2 + 2 4, ठीक है? The moment you are playing with the cutoff value, आपने पॉइंट से नीचे या ऊपर कुछ भी करना चालू किए, 500% गारंटी है उस पर एक्यूरेसी गिरेगी। चाहे कम कर लो चाहे ज्यादा कर लो, दोनों किस्म। अगर किसी को कंफ्यूजन मैट्रिक्स याद हो तो रिकॉल करने की कोशिश करें। अभी क्वेश्चन पूछना वाई है, लेकिन पहले बार ध्यान में बैठा लो। एनी अदर वैल्यू देन 0.5 कट ऑफ वैल्यू
मॉडल एक्यूरेसी ऑलवेज गो डाउन, तो कोई भी चांस नहीं, बिल्कुल कम हो जाए। सब मल्टी क्लास में 0.5 नहीं होता, मल्टी क्लास में अगर 1 वर्ड से सॉल्व करोगे तो होगा, तो अभी मैं अगर 1 वर्ड से सॉल्व करोगे तो होगा, नहीं आ रहा। अच्छा, ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा, नहीं लगा ऐसा कुछ होता है? ठीक है, अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन में आऊँ। ठीक है, पहले एप्लीकेशन समझते हैं, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन। आपके पास इनबॉक्स है गूगल का, मेल इनबॉक्स, पीपल हैव सम मॉडल, वो क्या करता है, वेदर इट इज स्पैम और नॉट, ये करता है, नहीं करता है, सब यही करता है। इफ इट इज जेन्युइन मेल, ये कुछ बॉक्स में आ जाती है, अदरवाइज स्पैम में। एग्री? आप मुझे सोच के बताओ, दैट इज अ क्लासिफिकेशन मॉडल, उसकी कट ऑफ वैल्यू क्या होगी? अच्छा ठीक है, आप कौन सा मॉडल चाह रहे हो, ये हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? वॉट एवर द गूगल इम्प्लीमेंटेड दैट मॉडल, इफ यू आर द इंजीनियर, यू आर द इंजीनियर इन दैट, और आपने सब कुछ इम्प्लीमेंट किया, आपको मॉडल अटैच करना है इनकमिंग ईमेल में, वो स्पैम करेगा या इनबॉक्स, आप कौन सा मॉडल लेंगे जिसकी हाईएस्ट एक्यूरेसी होगी, बोलेंगे? अब कोई हाँ नहीं बोलेगा, अरे हाँ बोलो ना, वही लेंगे। फिर मैं आऊंगा धीमे धीमे, अभी तो इन्हें पता है कि आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला नहीं लेंगे। अभी आप भी एग्री हो जाएगा, क्यों होगे? इन दिस सिचुएशन, क्योंकि हर केस में मत बोलना सर ने ऐसा कहा था, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस। मैंने क्या बोला? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज, समटाइम ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मॉडल विद द हाईएस्ट एक्यूरेसी इज द बेस्ट मॉडल, ऐसा नहीं होता, केस वाले केस में ऐसा नहीं होता। आप कैसा मॉडल चाह रहे हैं? अब मैं केस 1 दे रहा हूँ, अगर वो जेन्युइन मेल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेल है, आपका कहीं सिलेक्शन हो, क्या हो गया, मेल आ रही है, आपका सिलेक्शन हो, अपॉइंटमेंट लेटर, वो कहाँ जाना है? अब इसको मैं और थोड़ा करेक्ट करता हूँ, ऑल सच मेल्स दैट आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसकी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इनबॉक्स में? 0.9 भी चल जाएगी, सोच के बताओ। ऑल इंपॉर्टेंट मेल, यू वांट अ मॉडल, अब मैं केस डिफर कर रहा हूँ, अब मैं केवल एक क्लास पे फोकस कर रहा हूँ, जेन्युइन ईमेल यस पे बात कर रहा हूँ, वैसे नो पे बात ही नहीं कर रहा। मतलब मैं क्या अलाउ कर रहा हूँ, इफ द मेल्स आर जेन्युइन, इसका 0% चांस होना चाहिए स्पैम में जाने। एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं? वो तो स्पैम में जाना ही नहीं चाहिए। एक तो मेरा कहीं सिलेक्शन हुआ, कॉलेज से मेल आ गई, मेरी ड्यूटी लगी, उस स्पैम में चला गया, ठीक है। अब मैं इसका अपोजिट बोल, इफ एनी ऑफ द फर्जी मेल, ठीक है, वो अगर इनबॉक्स में आ गई तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब उस केस में 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए मुझे, उस केस में एक्यूरेसी से कंप्रोमाइज करता हूँ। इफ द मेल इज फर्जी मेल, इट मे अलाउ टू कम इन द इनबॉक्स। ये आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, समझना। ये किसकी है? आपकी। ये दोनों चीज क्या होती है जो मत बताया मैंने, डिसीजन रिकॉल यही होता है कि नहीं होता? बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आपको कुछ लोगों को पता होगा। डिसीजन रिकॉल मैं बहुत डिटेल में नहीं था। Decision recall, it talk about the performance of the model with respect to one class. क्लास मतलब मैं केवल यस की बात कर, मतलब जब मैं प्रिडिक्ट करूं, इफ द इनकमिंग ऑब्जर्वेशंस बिलोंग टू क्लास यस, उस केस में 100% एक्यूरेसी होगी, वो कभी गलत नहीं। दूसरा केस गलत है, नॉर्मली रिकॉल प्रिसीजन, रिकॉल प्रिसीजन में क्या होता है, एक इंक्रीज करोगे दूसरा डिक्रीज होगा, ऐसे होता है कि नहीं होता? दोनों दोनों बैलेंस कब में होते हैं? कट ऑफ वैल्यू 0.5, दोनों बैलेंस है, मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेट। जैसे ही आपने कट ऑफ वैल्यू चेंज करी, एक बढ़ेगा एक घटेगा, जैसे एक बढ़ेगा एक घटेगा, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? मिस क्लासिफिकेशन को अलाउ कर रहे हो, मिस क्लासिफिकेशन को अलाउ कर रहे हो, मतलब जो फर्जी मेल थी आने दो, ठीक बोल रहे हैं? तो जैसे मिस क्लासिफिकेशन अलाउ कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्यूरेसी डाउन होगी। सबसे परफेक्ट एक्यूरेसी 0.5 में मिलेगी, जो बैलेंस एक्यूरेसी और रिकॉल, रीसेंट रिकॉल का उसी केस में। जैसे आपने 0.5 से ऊपर नीचे चालू किया, एक घटेगा एक बढ़ेगा। अब आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, किसको घटाना है किसको बढ़ाना है। अपन को किसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है? पॉजिटिव क्लास की। ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉजिटिव क्लास शुड नॉट गो इनटू द नेगेटिव क्लास, ये बोल रहे हैं। मैं डायग्राम बताता हूं, ये लाइन यहाँ खींची है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको पॉजिटिव क्लास मान लेता हूं, मतलब
if the data points are in the red color, it always be predicted by red color. बिल्कुल कोई मैं इसमें कंप्रोमाइज नहीं. कैसे पॉसिबल है? मैं ये लाइन उठा के सपोज मानो यहाँ भी रेड कलर दिख रहा है ना आपको, इधर भी रेड, मतलब इसका मतलब क्या है? मेल इज जेन्युइन, जो मेल जेन्युइन आ रही है, लाइन क्या बोल रही है इसको? इट इज ए स्पैम. समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. इट इज अ क्लासिफिकेशन आर द जेन्युइन मेल, इट आर फर्जी मेल. ये कुछ रेड कलर पॉइंट वहाँ पर भी हैं. Means my line is saying all those red color points that are genuine, but my line is predicting it will not. It is a spam. Agree कर रहे हैं ना? समझ रहे हैं? अब मैं लाइन को उठा के यहाँ से खींच दूंगा. मैं यहाँ से खींच दिया. इस केस में क्या हुआ? अब करेक्ट प्रेडिक्शन स्टार्ट हो गया रेड कलर के पॉइंट पे. मींस ऑल दोज रेड कलर पॉइंट्स दैट वर मिसक्लासिफाइड ऑफ दैट लाइन, अगर मैं लाइन उठा के नीचे खिसका के यहाँ पर ले आया, इस केस में क्या होने वाला है? जितने भी रेड कलर पॉइंट्स हैं, इट ऑलवेज हैव 100% एक्यूरेसी फॉर द करेक्ट प्रेडिक्शन. अपोजिट क्या हुआ? ब्लैक कलर पॉइंट में इस क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया. कैसे स्टार्ट हो गया? These are the red black color points. इसको मैं बोल रहा था फर्जी मेल और करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा था. एग्री? मैं जैसे ये लाइन नीचे करूंगा, these black color points I will predicting as a genuine. इसके ऊपर वाले को जेन्युइन बोलूंगा ना सारे. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्जी मेल आने दो, अलाउ, मिस क्लासिफिकेशन अलाउ. लेकिन ब्लैक रेड कलर पॉइंट दैट आर जेन्युइन केस, वो इस लाइन के नीचे ही. तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा मेडिकल केसेस में. आप बोल रहे हैं मेडिकल केसेस में कोई एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, तो कोई बीमारी है, यस यस, उसको एक कोई बहुत बड़ी, आप कैसा मॉडल चाहिए? इफ समवन हैव अ डिसीज, उसको प्रेडिक्ट जरूर वो केस नहीं बदली. हाँ, किसी को वो डिसीज नहीं है, यस बोलते चलेगा. ये रियल केस है. ये मेडिकल में एप्लीकेशन जल्दी डिजाइन होगी, उसमें एक्यूरेसी नहीं देखेंगे, उसमें प्रिसीजन रिकॉर्ड देंगे, तो एक्यूरेसी डाउन होगी. अब क्या है? अब रियलिटी तो नहीं. सपोज समवन हैविंग वेरी 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 क्रिटिकल डिसीज, आपका मॉडल बोलता है इसको डिसीज नहीं, तो ट्रीटमेंट बंद हो तो घूमेगा फिरेगा कुछ दिन बाद, तो प्रॉब्लम. इसका अपोजिट नहीं. इफ समवन है, अब जो मैंने केस लिया, इफ समवन डोंट हैव एनी डिसीज लेकिन मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट, ठीक है, वो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, क्या करेगा, लेकिन उसको कुछ रियल में तो कुछ नहीं हुआ. उसको साइड इफेक्ट होंगे ट्रीटमेंट के, होंगे, वो अलग डिस्कशन है. लेकिन उसको रियल में डिसीज नहीं है, लेकिन मैंने ट्रीट कर दिया, तो क्या नुकसान है उसका? कुछ दिन तक परेशान रहेगा, ये रहेगा, कुछ ही बार पता चल जाएगा यार उसको कुछ भी नहीं. तो दोनों केस में कौन सा केस आप लोगे एज ए डॉक्टर? किसी को कोई डिसीज है दैट शुड बी करेक्टली आइडेंटिफाइड, तो आप उस केस में ये कट ऑफ वैल्यू चेंज, जो पॉजिटिव क्लास ऑफ प्रेसिडेंट उसको 1 कर देंगे, बिल्कुल 1 करेंगे, उसका 0.999% भी नहीं चाहिए. अब अगर मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूं तो पूछो. क्या पता है समझ पाया नहीं समझ, अब पूछो दोबारा. रिग्रेशन प्रॉब्लम. But between, if it is a regression problem, we don't have cutoff value. नहीं, but in regression problem, we don't have cutoff value. Okay. You are talking about the value of individual feature. Okay. So means you want a value of individual feature. Suppose age is a feature, temperature is a feature. By being the value of that feature you want to predict. Then it's okay, hemoglobin prediction. Okay. What are the input variable for that? Okay.
In the case of image, by image, they will predict the hemoglobin is 11, 12, like that. Image समझ 12. अब आपको क्वेश्चन क्या है? Okay. Who is thinking like that? Reviewer? Okay. They are asking such question. But in real field, okay. They are saying only that one level. Okay. That what they are asking, क्वेश्चन समझ में नहीं आया पर बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे बहुत समझ में नहीं आया, मैं खुद बोल रहा हूँ तुम किस रेंज की बात कर रही है। एक्चुअली में क्या कर रहा है, मुझे लग रहा है आप रिग्रेशन मॉडल कर रही हैं, रिग्रेशन मॉडल से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रेंज या यस नो ऐसा कुछ आप थ्रू रिग्रेशन इज द क्लासिफिकेशन इज द प्रॉब्लम एनीमिक after that the classification is there. पहले वो मुझे समझना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू है जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू व्हाट यू आर प्रिडिक्टिंग बेस्ड ऑन दैट दे आर पुटिंग द क्वेश्चन। हाँ यार whatever he is asking questions may be useful everybody क्योंकि conceptual answer है ना, mathematical answer नहीं होगा। You mention the input variable what your model is predicting and then what they are asking. What they are asking मैं marker है image is the input or that is output. Hemoglobin will be the output variable. होगा चलो अच्छा आप हिसाब से बता agree 0.5 something. And now, in this case, I'm predicting. yes no होगा ना ये कौन okay. And in this case, now this is, but this is not from the prediction. What is this? Like this. It's a prediction. Okay. During training, what are the input variable? This. What is the output variable? Hemoglobin also input variable. RGB. Agree. Output variable is a prediction. Okay. Based on this output, I am telling that okay, your hemoglobin is 10.5 less than 11.5. So, and ये 11.5 कहाँ से आया? That is also the prediction is also the hemoglobin that are predicting. It's the input variable, na? It's also my question is that is this it's a this data I'm you are predicting. you are saying because it is less than 7.5. Why you are saying less than 11.5? Type of this, there is like less than 11.5, then person. Okay. So ultimate it is also hemoglobin. They are Right. I'm asking question. prediction. So your output variable is also one of the input variables. Same. The target value क्या है? It's a prediction then. हाँ, maybe ना. It is input variable. हाँ.
and it is output variable. It's a multivariate regression. Agree. What during training? What is the target doing? It only predicts something. In training, you will predict. You have to match with some value or target value. Target value. What is the target? That's what I believe. So you say now this is the output variable. Agree? No, it is fine. So this is your output value. Next. How this 10.5 comes? From this, I applied the Okay. Now explain your problem. actually the problem is if the predictions are less than 10, then the error is coming -5. Correct. If it is greater than 10, -0.5. This is a good case. It is very common in medical. Like you told So that is that person is having efficient recall. You have adjusted. You are finding that. the problem is like in case writing paper, okay, somehow we adjust. Now when I'm trying to in the real time, problem is not. They are telling in this case, yes, it should become 4 or 0.3, even this is not standard. So how we can deal with this situation? Like my data is very Agree. So answer will be the way I have explained. Want to keep one side of the proving prediction is correct and right. They have something over that way. Mathematically you cannot. You don't always want model having the error 0.3 or 0.5. Model maybe this model is the error is plus minus. it is not greater than plus minus. Like, Maybe you might say in terms of error that is bigger than this. But having the model the bigger error may be a better model. So anyhow you have to take this kind of example. very different. So you can take this kind of example I have taken. They will understand. You take the example of inbox, what example I have taken, what you want. You want a model with higher accuracy or lesser accuracy with the higher accuracy. Like if someone having a disease, then it is predicting correctly. Okay, you have a disease. If someone is not having the disease, it is correctly predicting you don't have a disease. But the only problem is So you have to focus on more interpretation of it. Instead of going the mathematical or numerical, what is the interpretation of 0.5, 0.3 plus 1 and how it is benefit in that. Conceptually you have to explain without using mathematical. Now उससे काम नहीं बनेगा. They will not know. Application case by case 1, case 2, case 3. For such people, you can take the some cases of this number, you can cases of that number. So you can ask themselves or after it will be come with the debate with the discussion, not mathematically easy. the CSP5. Then they just like target it on this lower value. Why this is coming this much, why this is coming. So you try to do your discussion rather than mathematical number, what the interpretation of that. Then they might. बाकी तो और कुछ answer नहीं. So everybody asks that. It's like they are working on part 1.5 years. So No. So you don't think if someone is not get confused means you are doing wrong one. Don't take that. Don't take that. Whatever you are doing, to stick with one. Try to convince someone else is not ready with that one. That is your power. That is your capability. By putting a lot of cases, examples, that will help. और mathematically कोई answer. थैंक यू कहाँ 1 बज गए. अब आगे चलिए. ये मुझे लग रहा है काफी डिटेल से मैंने समझा दिया विदाउट मेकिंग मच डिटेल डिस्कशन. हाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कट ऑफ वैल्यू. Accuracy is not always higher. Accurate model is always not a best model. Means model with the highest accuracy is the best model. इस टेक को पे दिमाग से निकाल. It depend on totally on the
type of. That's why formula में precision recall है. बहुत लोगों को नहीं पता होगा. Please try to understand the precision recall. That's why we try to in some applications the more focus on the precision rather than accuracy. So real application में कौन सा मॉडल यूज होता है? It doesn't depend on the. She is experiencing their real experience. So sometime people maybe not in your field, they don't know much model development, validation, they have such kind of questions. It is very good for us. If someone is sitting before you asking a lot of questions, why this, why not this, why not this? That's why the way I'm trying to convey the conceptual things, if you know all those things, somehow you can convey. Otherwise, if you totally stick on the mathematical number, someone will ask answer why this, why not this. We will not be able to answer the question. So whole history, concept, or detailed understanding you require about the data set, about anything, so that you can convince. But in this kind of applications, this is the cases and why I have taken that. Convince to करना है ना आपको, ऐसा तो नहीं हो सकता ये आ गया तो आ गया ऐसा तो. So it's happened in everyone's life, especially in the defense or MTech defense presentation. बहुत कुछ होता है. They are going to deploy your model with the industry. They ask a lot of. So you need to learn how to convince them. So create many cases of what in which direction they are looking. Of case second, अब पूछो सर आप ही बताइए. कुछ they will answer something. It is coming because of. ना ऐसा कुछ and answer you have to find out by discussing your supervisor or मेरी आँख बंद करके सोचना पड़ेगा. तो कैसे मैं convince. तो वो आंसर समटाइम आंसर्स आर नॉट इन गूगल और नॉट समथिंग यू हैव टू कन्विंस. तो जितने आपके एक्सपीरियंस होंगे, इसलिए लोग बोलते हैं डिफेंस, पीएचडी डिफेंस और प्रेजेंटेशन कहीं भी हो रहा होता है ना, आपको बैठना चाहिए. हाँ, you need to understand how the people are asking the questions, how somebody have taken the problem, how they are validating whatever. It doesn't make any difference the presentations of the MTech and PhD in my field, किसी field में. So that convincing power is most important. Based on your background knowledge, how you are using that knowledge to convince someone. तो वो convince power पेपर राइटिंग में भी खूब आती है, खूब कमेंट्स आते हैं ना, आते हैं ना, ये क्यों कर दिया, आपको पता चल जाएगा इसने पेपर नहीं पढ़ा, ये भी समझ में आ जाएगा, इसको नहीं पता ये समझ में आ जाएगा कि whatever the reviewer is not in that field, ये पता चल जाएगा. लेकिन आप तो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं ना, आपको नहीं पता ना, तो वो कैसे आप फिर उसको आंसर लिख रहे हो कि उसका ईगो भी हर्ट नहीं हो और वो समझ भी जाए. बहुत से लोगों की फाइटिंग चलती रहती है कि तुम्हें नहीं पता, ऐसा ऐसा भी चलता रहता है. तो रिस्पांस रिव्यू अलग कहानी है, वो बहुत लंबी कहानी है, वो गूगल में कहीं नहीं मिलता हाउ टू राइट द रिस्पांस शीट. हाँ, एप्लीकेशन क्या है आपकी एप्लीकेशन में, यू वांट टू डोमिनेट, यू वांट टू फेवर वन क्लास, देन यू हैव टू चेंज द कट ऑफ, अदरवाइज चल रहा है उसको. कैट एंड डॉग एग्जांपल, गिवन इमेज इज कैट एंड डॉग. उस केस में कट ऑफ 0.5 होना चाहिए. मैं आंसर दे रहा हूँ बिकॉज एक सिंपल एप्लीकेशन इट इज कैट एंड डॉग. मैं किसी को फेवर नहीं करना चाह रहा ना, तो इस कट ऑफ वैल्यू 0.5 होगी. जैसे किसी एक क्लास को फेवर करना है आप, देन डिसीजन रिकॉल टू केना. इस हिसाब से तो डिसीज यस नो वाली बात है. तो दोनों है, लेकिन दोनों में मिस क्लासिफिकेशन भी होगा. चलो आप जैसे ही आइदर प्रोसीजर रिकॉल और फोकस करेंगे, एक्यूरेसी अप्लाई करेंगे, कोई काम. वही मैं वही कहानी बोल रहा हूँ, एक्यूरेसी बेस मींस इट इज नॉट द बेस मॉडल.
नहीं, आप इनबॉक्स वाला एग्जांपल दिया जिसमें आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। बायोमेडिकल में बोल रहा हूँ ना, बायोमेडिकल में डिसीज प्रिडिक्शन है मान लीजिए। नॉर्मल रिसर्च पेपर अपन पब्लिश करते हैं उसमें एक्यूरेसी रिसर्च पर्पस से अपन पब्लिश कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट रियल एप्लीकेशन जब करने जाओगे ना तो आपको तब फेल हो जाओगे, तब पेपर पब्लिश हो जाएगा एक्यूरेसी है भाई कैसे भी। So I am talking about the real applications where you have to favor one. बिल्कुल करना। ये आंसर कौन बताएगा? आपकी एप्लीकेशन के एक्सपर्ट उसके बारे में। बायोमेडिकल विच डिजीज विच वो क्या चाहते हो आप उससे पूछो, वो बताना चाहते हो। You have to collaborate the medical expert who are working in it. मैं तो डेटा साइंटिस्ट में 2 मिनट में कम ज्यादा कर दूंगा, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। वैल्यू पर नीचे 0.5 मुझे ऊपर करना है नीचे करना, आंसर इज फिक्स बाय वो यूजर ऑफ योर कौन यूज क्या देगा। तो रिसर्च पेपर पब्लिश करना इज डिफरेंट थिंग, बार-बार बोल रहा हूँ। रियल फील्ड इज डिफरेंट। तो आपका आंसर आएगा जो एक्सपर्ट है आपका यूजर, बिल्कुल आंसर। आपस में तो खुद एक्यूरेसी की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जैसे लोन के केस में क्या होता है, आई एम द मैनेजर, आई डोंट वांट टू एनी रिस्क। मैं क्या करूंगा, कट ऑफ वैल्यू बहुत ऊपर कर। इफ माय मॉडल इज 80% तो मैं लोन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। मींस I don't want to take the risk, means whom I am plotting the loan वो 100% रिटर्न करते हैं, वो रिटर्न मैं कट ऑफ वैल्यू हाई कर दूंगा। मैं बहुत अच्छा मैनेजर हो गया यार, ये भी लोन देता है, सारे वापस आ जाए। ये सारा पता चला ऐसा 10 लोगों ही लोन दिए, ये सही होगा? ये तो बिजनेस जनरेट नहीं कर रहा, पूरे ब्रांच बंद कर दी। दूसरा मैनेजर हो सकता है कट ऑफ वैल्यू नीचे कर दी, मैं सबको लोन दे रहा हूँ, मैंने इस साल 5,000 लोगों को लोन दे दिया, रिटर्न कितने आ रहे हैं? दोनों केस है आपके पास, आपका नेचर क्या चाहते हो आप, एक बीच का बैलेंस हो। तो ये आपको यूजर बताएगा आपका। एज ए टेक्निकल पर्सन मैं तो हाईएस्ट एक्यूरेसी लाके दे दी, आपको क्या करना है बताओ। डिसीजन चाहिए कि रिकॉल चाहिए, वो दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीजर एंड रिकॉल, उसका इंटरप्रिटेशन बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पूरी बात? तो आंसर वो ना मैं दे सकता हूँ ना आप दे सकते। तो ये वो कहानी पूरी हो गई। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स सबको पता है, इधर किसको नहीं पता वो हैंड रेज कर दें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं पता। एवरीबॉडी नो द कंफ्यूजन मैट्रिक्स ना, मैं जानबूझ के डिटेल में नहीं जा रहा इसमें, बहुत सारे कर्व। ठीक है, मैं ये भी स्किप कर रहा हूँ। मल्टी क्लास खत्म करके अपन लेक्चर खत्म कर रहे हैं बस। Very briefly I will discuss the multi-class classification. I will not go in much detail. Multi-class classification is very simple, like in the binary classification, whatever the example I have taken, the binary classification, the prediction. In many cases, binary classification problem, we have a problem with the multi-class, which means more than two classes, more than two. Like the email we are receiving, it may be I want to divert the email like well also like the many advertisement inbox, many different boxes are there, means it's a multi-class classification. Whether is coming mail you want to designate as a work related mail, as a friends mail, family mail, as a hobby वगैरह. Similarly, the medical diagram means based on the some image or some consider you want to predict tomorrow will be or the person will be ill, not ill, or वगैरह वगैरह वगैरह. Today's tomorrow will be rain, not rain, summer, hot, something you want to predict. So in many cases there are not a case of binary classification, there are multi-class classification. Binary classification are very simple, where some observations belong to the class A, some are class B, like denoted by the circles and the cross data set from the two classes. So in between you can draw a line, you can separate them, and then that we call a binary classification. That is very simple class.
But in other cases where you have a multi-class classification, means where the observations belong to more than 2 classes. Here we represent like a rectangle, triangle and the cross. So by a single line, you can separate all the 3 classes. You try to understand. There is no way. Means there is no way to draw a single line that can separate the 3 classes. Agree? Yeah, more than 3 as a possible. Quite possible. We can't have a such lines. So how to solve it? So in such cases, solution is that one versus all या one versus rest. अब कैसे करते हैं समझना, बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट वेरी पावरफुल. वन वर्सेस ऑल या वन वर्सेस. अब हमको बहुत सारे मॉडल बनाने पड़ेंगे, एक मॉडल से काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो व्हाट केस 1, केस 2, केस 3, फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, where I will consider one class as a class A या class B, whatever you want, combine all the remaining classes as a one. ठीक है, take any one class as a primary class, combine all the class together. I am converting multi-class classification to the binary class. Agree? और जो binary classification पढ़ा है वो लगा दो. Agree? So I have put that one. This is the one simple logistic regression I have applied. Where triangle I have taken the primary classes and rest 2 classes are combined and denoting as a this class. ठीक है? Phase 2 या case 2 नहीं बोलेंगे, continuously. Second iteration बोल सकते हैं. Second iteration, I will consider another remaining one of the 2 classes are remaining. One make as a class, remaining as a combination of the rest of the classes as another class, and try to make the problem as a binary classification and model on the field. ये इससे different होगा. ठीक है, वो totally different model क्योंकि डेटा से different हो गया. Yes 3 सारे केस समझ में आ गए? Clear? So this is the concept we call one versus all, where we try to develop the different models by keeping one class as a primary class, rest of all the classes as a secondary class, and in such case we have a multiple models. अब क्वेश्चन आ रहा होगा इसे कंबाइन कैसे करेंगे? कंबाइंड का मैंने आइडिया दिया है, कंबाइंड में सॉफ्टमैक्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने कवर नहीं किया इसमें. एक्चुअली में क्या होगा, in binary classification that was easy because output will be probability 0 to 1. It is close to 1 class A, less than 0.5 class B. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 आउटपुट आएंगे. अब मैं रियल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ. इन रियल एप्लीकेशन इन बैकग्राउंड यू हैव 3 मॉडल. 3 मॉडल जैसे दिखा है तीनों है. एग्री? आई हैव फीड वन इनपुट, it will go to model A, model B, model C. बिल्कुल तीनों पे जाएगा. ठीक है, model A, model B, model C. Agree? Suppose the probability will be given by model A is 0.6. याद कर लो क्या? For a given input, we have a 3 model. I have to feed that to the other 3 model. Model A 0.6, model B 0.5, model C 0.4. Agree? Agree? ये तो probability हो गई आपकी. एग्री है? प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना आना चाहिए? यहाँ कितना आ रहा है? 0.6, 0.5, 0.5. प्रॉब्लम आ गई. अब इसके आगे से स्टार्ट होगा. Exactly happen in that way. Whatever the number of model you develop, it will predict given single input 3 prediction input. 3 predictions आ जाएंगे. इसको अपन नॉर्मलाइज करेंगे. अब तक मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ. इसको नॉर्मलाइज करने के बाद सॉफ्टवेयर फंक्शन में सॉफ्टवेयर फंक्शन लिख लो अगर याद नहीं हो किसी को. इट इज लाइक अमिताभ बच्चन इन दैट फील्ड. ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर फंक्शन पता होना. मैं मुंबई में काम करता हूँ, मुझे अमिताभ बच्चन नहीं पता, इतना बड़ा नाम है. ठीक है, पूरा डीप लर्निंग, पूरा सब कुछ सॉफ्टवेयर. क्रॉस एंट्रोपी बोलते हैं इसको. क्या पूरा नाम क्या है? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. तो सॉफ्टवेयर फंक्शन में लगेगा ये. हाँ, बहुत हमको सॉफ्टवेयर फंक्शन. बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी is a training method. बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्या करेगा, मैं बहुत जल्दी बता दूँ. तो सपोज पढ़ने में मजा आएगा, गूगल से करें. बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को एक और नाम बोलते हैं.
कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा रहा है तो करो मिलेगा बाइनरी क्रॉस इंटरव्यू कुछ और बाइनरी क्रॉस इंटरव्यू बोलते भी हैं और एक टर्नरी भी मतलब ठीक है उसमें नहीं जाता सपोज error is 0.6 0.5 0.4 for a single input variable एग्री ऐसा कुछ दिया यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो 3 मॉडल थे ना ये 1 2 3 रियल सेंस ये ट्रेनिंग में भी होता है ट्रेनिंग ही बता रहा हूँ मैं या रियल जो मैं बता रहा हूँ वट एवर द इनपुट विल बी गिवन आउटपुट इज गिवन बाय द मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3 लाइक दैट ठीक मैं बहुत शॉर्टकट में कवर कर रहा हूँ इसको थॉट क्या है and you have an output variable means whatever the input was given वो किस क्लास में था किसी एक ही क्लास में तो होगा इसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन suppose the input variable was in class 1 class 2 class all zero होंगे because true value I have to give during the training process whatever the input I have given because in the one versus all the three different model we have trained we have feed that input value to three different model each and every model will predict something that probability was this. Okay but real output is 1 and other output is 0 one matlab this observation supposed to belong to this class 1 not class 2 class 3 multi class classification multi level में one point can belong to the multiple classes बहुत tough हो जाएगा ठीक so based on this relationship by using the cross entropy function what we try to do we will try to adjust these all three lines in such a way for the given input it will go to the close to the one supposed to close to means training में क्या हो रहा है during multi class classifications we have three different model all the three line we have to adjust such that the probability given by this line suppose this is the class 1 a correct model or suppose this is the primary class otherwise the reference class the point belong to this kind of characteristic so by using the cross entropy function we want to adjust the weight all the three models such that probability given by the first model will be the higher side one and other will be तो कुछ ऐसे ट्रेनिंग चलती है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में बहुत शॉर्टकट में खत्म कर दिया बहुत शॉर्टकट सो दैट इज गिवन बाय द क्रॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी अंडर द सॉफ्टवेयर फंक्शन है क्लासिफिकेशन I didn't think to cover that part because it bit mathematical but I hope understanding the objective of that function cross entropy now you will refer to the different books and literature you will find yourself in better position to understand what it is happening otherwise mathematically cross entropy लिखा रहता है क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता उसमें क्यों कर रहा है समझ में नहीं आता why we are doing like that so means graphically very rare to find it is concept of multi-class class okay. So by this slide I consider whatever the 2 sessions you have spent with me I hope somehow it was fruitful and are in a better position to understand the data set, algorithms, models, properties, and how to look the problem. Your objectives suppose we understand the holistic understanding of the data set, features. It should not be like that. Data set has been taken and कुछ किया और import किया और model रन करा. In many ways you have to understand. There are many courses, many blogs, many books. You have to understand, you have to give your time to read all such resources. There is no single resource in the world that will make you comfortable to understanding all the time. Learning comes in different time zone by referring different books. Doesn't come in the single. So spend your timing with the one. In the good institute by referring videos, books, slowly will develop. It will help you a lot in interview, in project defense, project presentations, paper writing. So thank you a lot for spending your
more than 3 hours with me. And I am very grateful to Dr. Anurag Singh sir for inviting me and giving this chance to visit Tiwari, and to again to spend my time with my friends also. I'm waiting for those to allow. Thank you very much. Question and all, have you question and answer session is any doubt, because this session was completely based on machine learning. We will do that as a case study in the afternoon session. Practice in the lab, but here this I requested her to make it more focused towards ML part, because many of you are just starting your research career, you can say. But, so this session was meant for you to get started, how to get started, how to see overall classification problem, a regression problem, how to get started in group. So I hope it was very important. Thank you. Hold on, that but is not asking the question. It's not good for the person who has been of what why it is not asking. Yeah, because here you are not sitting in lecture room, classroom. Here you have come in a workshop. Workshop means कि आप यहाँ पे कुछ सीखने आए हो, और जब तक आप पूछो कि might be question might be answered by maybe answer wrong. It's okay, ठीक है. And आज you will not get the answer. So ठीक है. So try to ask. ठीक है, तो silly question भी हो सकता है. Okay. But unless you not ask, you not come to know that question was very informative, very. I hope to. But if you see that you are having any doubt, any question in mind, good there. ठीक है, बाकी भी correct हो. एक दिन मैं यहाँ भी हूँ, बाकी मेल में तो Thank you. Thank you, sir. So now I may request to Dr. Anurag sir to please felicitate Dr. Vivek Tiwari sir with the token of gratitude.